Thank you. Good morning, students. Today we are on paper 5 of final and 4. Yeah, I can't. It's paper 4. We are on the paper 4 of final, group 1. Yesterday you had the first class for this particular subject, corporate laws. And today we are going to have the second session of this particular session, where the corporate law as well as the other economic laws will also be covered, right? So students, yesterday our Central Council member, CS Ripriya Kumar, had also joined, and she had apprised you as to how to really prepare for this particular paper. She gave her own example as to how she studied. So out of her own experience, she has also told you and apprised you as to how to deal with this particular subject. This being the law paper, you need to understand the sections, its provisos, and how really to write it down. So she has given you the important tips as to how to deal with this paper. And yesterday, thereafter, our own faculty, Nisha and Megha, they have rather taken you through to the particular subject. Yesterday, they had covered as to how to make the presentation. They have also talked about the exam strategy and how to practice and revise the paper, what type of language you need to use while writing your answers, and how to attempt the MCQs, right? And they have also apprised you with the skill-wise and section-wise weightage also, so that you can plan your study accordingly. And also they have yesterday discussed about the provisions relating to directors that are covered in chapter 1 and chapter 2. So today they'll be carrying forward this particular journey of corporate and economic laws, and they are going to cover today the meetings, inspection, inquiry and investigation, winding up, operation and mismanagement, and from the economic laws they'll be covering the PMLA. They'll be covering also the Insolvency and Bankruptcy Code, the FCRA, FEMA, and the Arbitration. So they'll be touching upon all these particular topics, and they'll be making you understand through questions. They'll be picking up the question from these topics. They'll apprise you how really you need to understand the proviso to that section and how really to attempt that answer. Because sometimes you are aware what is there in the question, but at times when you are writing, you are not writing what is exactly expected from you. So you should understand the question properly, what is asked from you in this question, and then attempt your answer. So Nisha and Megha will be taking you through. Listen to them carefully. In case you have any queries, you can always send your query over here, and they will be resolving your queries now and then only. And later on also, once you are going through the recorded lectures also, and you find you are stuck up somewhere, you can thereafter also post your query in the BoS mobile app and in the Ask Your Query section. And Nisha and Megha will be answering your queries within 48 hours. So do not be, rather have that fear factor in you as to how am I going to finish my revision, and then how am I going to plan my studies, and how am I going to use those 3 hours time in the exam, and especially the 15 minutes time of reading. So I think they would have told you how really to use that 15 minutes time. That is very crucial, because this 15 minutes time will tell you as to which question to attempt first, and thereafter the order in which you need to attempt the balanced question paper. So do not spend too much time on one question. Allocate the time as to how much are you going to give it to each particular question. Then only you will be able to plan out and complete your paper in the 3 hours time. So students, for that, after these sessions get over on 26th of September, we are starting with our mock test series 1 from 27th September, and thereafter the mock test series 2 is going to start in the first week of October. So after you are through with your revision, attempt these mock test papers, which is really going to help you in planning for your exam time. Because once you have done this particular, completed the question paper
in the examination conditions at the respective branches which are near you, or suppose you are not able to go to your branches, but still what you can do is you can download the question which is given in our BOS knowledge portal, attempt the question, and after 48 hours we are uploading the answers also. Check where you have gone wrong, plan out your things in such a way that you do not have any apprehensions or fear factor while going for your exam. So one thing which our earlier council members have also said, that enjoy what you are reading. Till the time you don't enjoy, you love the subject which you are studying. Enjoy what you are reading and write down in a manner that you give your best presentation. Our answers are also there in our study material also, in our, you can also go through the suggested also, the revisionary test papers also, as to how really you need to plan and how really you need to write. In case you are not remembering the exact section, don't quote it, right? You can always say as per the provisos of Companies Act or as per provisos of that particular act which you are going to answer, right? So try explaining the things in your own language, but make it a point to cover the key words which you need to write in the questions which are relating to law. So let it be in your own words, but the language of law should be depicted, because you are the final level students of law paper. So you need to know the meaning of that particular word which is coming in that section and how really to interpret it. So once you do that, nobody can stop you from getting very good marks. And students, one more thing is there, our MCQ booklet is also there, which is the edition January 2022. So along with that, you can also see the updated amendments till 30th April 2022 and attempt the answers and plan as to how you are going to do your MCQs also. Read the nitty-gritty of that particular MCQ and see the options. And wherever you are getting stuck up, you can follow the exclusion method. You can see which all options are not at all relevant. Remove them. Then whatever options you are left with, just recall what you have read it while studying and then attempt the MCQs. Right, students? So BOS is there with you and we are coming to your doorstep so that you are able to do well, not only in your exams, but you turn out to be very good professionals, because you people are the torch bearers of this profession. So work hard, be very sincere, and follow the ethical practices and do well in your exams. Now, students, I am going to welcome my faculty, Nisha and Megha, and they'll be now starting with the topics, and they will be starting from the meetings in the Companies Act. But students, before they start, there is going to be a break of 1 minute because we are going to change the platform. So kindly bear with us and then attend this session. Thank you very much, students, and all the best. And all the best to my faculty, Nisha and Megha. And now they are one of the best of our faculties, and the entire team of BOS faculty is very good. They have done your study material. They have done everything for you. Now they are with you to make your journey till the exams very, very smooth and comfortable. Thank you very much, and kindly bear with us for 1 minute, and thereafter the session will resume. Thank you.
Good morning, dear students. Myself, Megha, along with Miss Nisha, welcomes you all for the today's session organized by BoS For Your Success for Paper 4, Corporate and Economic Laws. Before starting the lecture, we first like to thank you, Vanda Ma'am, Director, Board of Studies, who has apprised you regarding certain tips, examination tips, and how to handle the paper. She has apprised you regarding the allocation of 15 minutes time, which is provided to you before the 3 hours time, reading time allocated 15 minutes to you. She has also apprised regarding the two mock test series, which is going to held in September and October starting. So please do the mock test series at your home under the examination conditions. She has also told you regarding the quotation of section numbers, that if you remember the correct section number, then quote it. Otherwise, you can just start with the provisions of the act. And she has also told regarding the usage of legal language, that is, you can write in your own language, but some legal touch should be there, like some keywords relating to law subject should be there. So before starting today's lecture, we again request you to focus on for this 2 months time and stay positive. You are the pilot of your life, and you have to define your own life. You have to take your life towards fulfillment of the dream which you have seen for becoming a chartered accountant. If you have seen a dream, then you have to grab it and do not lose hope and do not let it go, that dream. Don't be influenced with the other people or social media. Try to judge what is good and what is bad according to by applying your own mind. Many people will say you many things, many negative thoughts, many negative thoughts regarding the question paper, regarding ICI, but don't be panic. Stay calm and do your study in a positive manner, in a very hardworking manner. And you will surely touch the success after doing a lot of hard work and smart work. We are assuming that you must be aware the difference, you must be knowing the difference between the hard work and the smart work. Plan your strategy yourself and do read the study material many times and do a lot of practice. So can we start, Nisha? Yes, but only the one thing that I need to focus over here is that whatever the thoughts, whatever the ideas, whatever the tips or the suggestions we have shared so far with you, it should be used. Because any ideas are useless unless it's being used. So remember this thing. And today, most important thing, Vega, is that our students should know that today is 14th of September, which is also known as हिंदी दिवस. आज के दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं. And the Constitutional Assembly on 14 September 1949 declared Hindi language as a Raj Bhasha, which means the official language of the India. So that's why we should salute our Raj Bhasha, Jai Hind, and our to the nation, to the country, Jai Hind. So with this great feeling of patriotic feel, let's move with the session, and with that with enthusiasm that we are being required to learn this subject. I'm telling you, this subject is very important at the final level, and also being part of the core papers, this also forms the part of the elective paper. Also, some of the chapters are common here with that to the economic laws of the elective paper. So far as whatever we have discussed is related to the directors yesterday in the session, and today's we shall be discussing the further chapters and the related concepts at today's session, and we will be trying that you should be driving maximum benefit of this session. Yes, Nika. So now today at this time we will start with the chapter 3. Very briefly we will try to cover some important provisions of some of the chapters, because in 2 to 3 hour session it's not possible for us to cover every chapter. So we will take some important chapters or some chapters, and from that to some important provisions. Moving to chapter 3, meetings of directors and powers. As you must be aware, the directors frequently meet between themselves to conduct the day-to-day affairs of the business of the company. Then the modern practice is that all the powers are provided to the directors except few.
which are only with the general meeting. There are some powers, mostly powers are with board of directors, but there are still some powers are left because to the general meeting, because they are the powers to be undertaken, exercised by the shareholders only. The board of directors oversee the management of the company to ensure that the interest of the shareholders are protected and the goal of wealth maximization is achieved. In the Companies Act 2013, the provisions relating to Chapter 3 are Section 173 to 193. First of all, we will discuss the most important, very important provision, that is Section 173. It covers many things like frequency, notice, participation of directors. So if we see the 173 very fast, we will see that the board of directors shall meet within 30 days of its incorporation. So the first board meeting of the company must be held within 30 days of its incorporation. It is a mandatory condition upon the directors, upon the company. After that, they have to meet, they have to conduct 4 minimum. I'm not talking about maximum. They have to conduct minimum 4 board meetings in a year. And according to secretarial practice, if we see, it's a calendar year. It's not a financial year. So minimum 4 meetings in every calendar year. And one more thing important is that the gap between these 2 meetings should not be more than 120 days. For example, the board is conducting a meeting, one meeting in April, and second meeting he is conducting in November. But he is fulfilling all the 4 meetings in a calendar year, but it is not right, because the difference, the gap between April and October is more than 120 days. So the minimum gap between these 2 board meetings should not be more than 120 days. Then we can see that previously the directors have to attend the meetings physically, but now the Companies Act 2013 has allowed the board of directors to participate physically also, and they can also participate through video conferencing, and there are other audio visual means provided in the subsection Rule 3 of the meetings of rules. If you see, there are details of given what are the audio visual means, but the जो major technicalities हैं वो है that is our physical attendance and video conferencing. Then moving to notice of the board meeting. Then how much time notice is required for conducting the board meeting? If we say that for conducting a board meeting, minimum 7 days period is there for sending the notice for the board meeting, and this notice has to be sent to every director at their registered office. It can be sent by hand delivery, or it can be sent by post or by electronic means, that email. But what happens if the board of directors wants to do an urgent meeting and 7 days are not provided with them? So they can send a shorter notice with 7 days condition is not fulfilled in that, but they have to fulfill one condition, that is they have in that board meeting, one independent director. If the company is having an independent director, so that independent director must be present during that meeting, which is held by giving shorter notice. Then moving to section 174 very quickly, we will see that quorum is also very important, because for conducting the board meeting, for holding the board meeting, but the transactions, the resolutions we can only pass. The meeting can be started only after when the quorum is present. So what is the quorum for the board meeting? Quorum for the board meeting is 1/3 of the directors or 2 directors, whichever is higher. And what happens if the meeting is not held? Meeting is not held due to lack of quorum. By chance the quorum is not fulfilled. Then the meeting is adjourned, automatically adjourned to the next week, same time and place and same day. That is, if the meeting is held on Wednesday and due to want of lack of quorum, the meeting is not conducted, so next Wednesday, and if that day is a public holiday, then it can be undertaken by next Thursday.
Then powers of the board. 179 and section 180 has provided some certain powers to the board of directors. Section 179 provides powers to board of directors which they can undertake at the board meeting. They have to duly pass a board resolution for that, and some powers they can delegate. They can further delegate to committee of directors, managing directors or managers. But as I have already previously told, that some powers are only held with the general meeting. There are certain powers which the shareholders do not want to share with the directors. So that is covered under section 180. For that transactions, the board of directors have to conduct a general meeting, and the shareholders themselves will take the resolution, will pass the resolution through SR, and that meeting also the qualification, the requirement is passing of a special resolution. So there are two categories of power. 179, under 179 the powers are with board of directors, and under 180 the powers are with general meeting, with shareholders. Then moving to 181, 182, 183, these are also very important provisions because many calculative questions came from these three provisions. What are these provisions relating to? These provisions relating to your contribution. The board of directors want to contribute towards some charitable organizations, or they want to contribute towards political contributions, or they want to contribute toward national defense fund. So they have to follow all the provisions given under section 181, 182 and 183. They have given minimum limit. They can, if the donation is up to minimum limit, they can undertake themselves. But if the limit is exceeding the limit prescribed under these sections, they have to go to shareholders. They have to conduct a general meeting for that. After that, if you read the study material, you will see that there are vigil mechanism is also present in the study material. Audit committee provisions are also very important in the section 178, 179, and nomination and remuneration committees there. Then one more important, 185, it has been completely replaced in 2-3 years back time. Then moving to, there is a provision relating to loan and investment by company and related party transactions, 188. These are the very important provisions, and from this chapter, the question is based on many times evaluation and synthesis, and it is also covered under your question compulsory. So a compulsory question can come from chapter 1, chapter 2 and chapter 3. And many times if you see the last year suggested answers, you will see yourself that how these chapters are very important, because all these three chapters constitute under chapter question 1 compulsory, and you cannot skip the question number 1 compulsory. So you have to read these chapters thoroughly. Now we will see some questions. As Megha has already told you that regarding the 170 requirement of holding of the meeting with respect to the companies. But there are certain extra relaxation has been provided by these sections. If you have noted and come across with, these are the companies of section 8 companies as well as OPC, dormant company and private startup companies. So they have been provided certain relaxation with respect to the holding of the meeting as per the requirement of section 173. So kindly go to this exception clause also, because they are again very important considering the nature of the question. Sometime because of the exception provided with the limitations, these sections are applicable on these companies, and that is why sometimes questions are framed to check that you are also aware of the exceptions or the limitations that has been provided to these certain specified companies with respect to the compliance of section 173. So please remember the exceptions clause also. So now we will discuss 1 or 2 questions of this from this chapter. The balance sheet of last 3 years of ABC Limited contain the following information and figures. Paid up capital, these 3 years differences figures are given as at 31st March 2020, 21 and 22. 3 years figures are given. Students, do these type of questions very carefully because they are very scoring. They are very easy. They are looking like very big question, but these type of questions are very easy to score marks. Paid up capital is given, general reserve is given, credit balance in P&L account, debenture redemption reserve, securities premium and secured loans.
On going through other records of the company, the following is also determined. Net profit is given according to 2013. As per section 198, net profit calculations are given. In the ensuing board meeting scheduled to be held on 5th September 2022, among other items of agenda, following items are also appearing. To decide about borrowing from financial institutions on long-term basis, to decide about contributions to be made to charitable funds. So in this question, they want two things. That is to decide about borrowing from financial institution. The company wants to borrow from some financial institution. So up to what limit they can borrow. And secondly, they want to contribute to some charitable funds as per section 180. So these two calculations we have to derive, that whether the company can borrow from the financial institution and up to what limit the company can contribute, the board can contribute to the charitable funds. Based on the above information, you are required to find out, as per the provisions of the Companies Act, the amount up to which the board can borrow from the financial institution and the amount up to which the board of directors can contribute to charitable funds during the financial year 2023 without seeking the approval in general meeting. Because if they want to if they exceeding the limits as provided under sections, so they have to go to the general meeting. Yes, borrowing from financial institution, it is covered under section 180. Here we are writing only subsection 1 and subsection C. Yesterday we also told you that according to marks and according to requirement of the question, we are not supposed to write the full provision of the act of the section. We can here, as you can see in this question, we are just specifying, just writing the clause C of part subsection 1. So you can straightforward start as per section 181C, or you can start as per the Companies Act. The board of directors of a company, without obtaining the approval of shareholders in a general meeting, can borrow money, including money already borrowed, up to an amount which does not exceed the aggregate of paid up share capital of the company, free reserves and securities premium. Means the company can borrow, it has to make calculation that total of paid up capital, free reserves and securities premium. Okay, up to these three things, calculate sum total of these three things, they can borrow, the company can borrow, the directors can borrow. But if the company wants to borrow beyond this limit, they have to go to shareholders. Such borrowing shall not include temporary loans obtained from the company bankers in the ordinary course of business. There are many loans undertaken by the company for the day-to-day affairs of the company, which are payable within a year. So these type of loans are called temporary loans. So in this 180 section, the borrowing of the company does not include these temporary types of loan. Here, free reserves do not include the reserves set apart for specific purpose. Free reserve means which we can freely distribute. But if we see the question, there are some type of reserves which are used, which are reserved for some specific type. So we will not include, we will not add the reserves specified for reserved for some specified reasons, specified reserves. So we will not include that type of reserves. Since the decision to borrow is to be taken in a meeting to be held on 5th September, the figures we will take 5th September 2020 का previous जो latest, what was the AGM, 31st March 2022. So we will take that figures into account. According to the above provisions, the board of directors of EBC Limited can borrow without obtaining the approval of shareholders. What is the capital? What is the calculation? Paid up capital 75 lakhs. If we see that these last three digits, these figures up to 31st March 2022, we have to consider. Just like paid up capital is 75 lakh, your credit balance in P&L account 10 lakhs, and general reserve, your general reserve is your free reserve. So we will include general reserve also. Credit balance in P&L account we will also take as a free reserve. Debenture redemption reserve, this reserve is not considered because this reserve is created
for some specific purpose, for some specific reserve. It is reserved for redemption of debentures. So we will not include the DRR. Then securities premium is also included. Then if we calculate, if we add these figures, the total will amount to 1 crore 37 lakhs. So the company can borrow up to this limit. The company can borrow up to 1 crore 37 lakhs. But the company has already borrowed some amount. What is the amount? The company has already borrowed 30 lakhs. So we have to deduct these 30 lakhs from this 1 crore 37 lakhs. So balance remaining which the company can borrow from the financial institution without taking the approval of the general meeting is your 1 crore 7 lakhs. So you have seen that part 1 we have done. It is very easy question, but your concepts must be clear that what are the free reserves we have to calculate. DRR will not be taken. Securities premium we have to consider, and temporary loans we will not consider. And the loans, secured loans, we have taken 30 lakhs. Okay, so with these types of figure you have to undertaken. Then moving to part 2 of this question, contribution to charitable funds. As per section 181 of the Companies Act, the board of directors of a company, without obtaining the approval of shareholders in a general meeting, can make contribution to genuine charitable and other funds up to an amount which in a financial year does not exceed 5% of its average net profits. So every year they can contribute to the charitable organization, but what is the limit? The limit is maximum 5% of average net profits during the last 3 financial years immediately preceding the financial year. But what if the company wants to contribute beyond the 5%? Simple, they have to go to general meeting. After passing special resolution, they can contribute. According to above provisions, the board of directors of ABC Limited can make contribution this without obtaining the approval of shareholders in the general meeting. The calculation is as done, as we have seen that 3 years average preceding last year. So preceding, the company wants to contribute on 5th September 22. So the last 3 preceding year will be 22 ending 22, ending 21, ending 22. So these 3 calculations we have to do. Total is amounting 66, and 66 have to be divided by 3 because we have to take the average. It will be divided by 3. So 5%, if we take 5% of 22 lakhs, it will amount to 1,10,000 rupees. So the maximum amount that can be donated by the board of directors to charitable organization is 1 lakh. Beyond that, they have to take the special resolution. So you will see that this question is very simple, but if we read the question paper, we will see that how difficult it is. It's a very lengthy question, so much calculation will be involved into it. But if we do these type of questions are covered in RTP or suggested, and these type of questions are covered in study material also. If you practice these type of question, it's a very scoring, and you will surely get good marks into it. Actually, just giving glance to the figures and the facts, sometimes the students are seeming that it is a complex nature of the question, but in real sense, if you know the concept, you know the provision, and you can easily make it out what is being required to be taken into consideration out of given so many figures and the information. And in fact, you can see that in this question, generally this question is just looking at this part of the question, you are just considering, oh my god, so many figures, so many informations. But only the thing is, you should know what are the things required as per the requirement of the legal provisions. So take that thing into consideration. So read the legal provisions for clear understanding what are the requirements. Further, if that Sumit Jain is asking with respect to this part of the question only, that whether we have to cite only the section number or subsection and clause without citing that subsection. Only section. Sumit, you can do one thing. If you are very much sure that with respect to the power of borrowing, if it is enumerated under subclause C, yes, of subsection 1 of section 180, then you can do it. But of course, remembering so many clauses, so many sections is a big deal. So what you can do, you can simply cite the main section, that is the section 180 of the Companies Act. That is sufficient. And if you are not able to remember that section also, then you know what is the, you can say the Ramband or the Tod, what is the main thing what you can do, what is the solution. So it is of course simply by writing the name of the act, that is also sufficient.
Dear student, today I'm going to use at many places Hindi because already I have told you today is Hindi Divas, and somewhere I'm having a feel for my this Raj Bhasha. So I'm going to use at many places Hindi. Please don't mind. And as far as possible, we will be using in English also, so that there will be no difficulty in understanding of the concepts to any of the students in Pan India. Now moving to the next question. Yes. Now, this is a case scenario based. One case scenario question we have discussed yesterday, and this is another case scenario. This will comprise in your 30 marks MCQ. So, and Vanda ma'am has already told that there is a separate booklet for these case scenarios and MCQs. So, please go around 30 case scenarios are included in it, or 40? There are around 40. 40 case scenarios and around more than 100 MCQs, independent MCQs are there. So do a lot of practice from that booklet also. But after doing the study material, we are assuming that you have completed your study material, but revise from the study material also and do this booklet also. The case study. Atlantic Garments Limited is a public limited company engaged in the business of manufacturing of garments for all seasons. The certificate of incorporation bears the date of 15 January 2020. The number of directors in the company are 14. The first meeting of the board was held on 15th Feb 2020. Thereafter, the subsequent meeting of the board were held on 29 February, 25th March 20, August 20 and December 20. So after reading these two lines, two paragraphs, you will get to know that this is relating to section 173, and because frequency of board meeting is given, the details of dates of holding the board meeting is given. So you have to quickly analyze that in this case study, the starting is from section 173. In these meetings of the full strength of the board was present, except in the meeting of 25th March 20. In this meeting, only 4 directors were present. So this will be a question, here will be a question of, obviously, of course, there will be a question for on 174, quorum, because presence of director is being given. One of the director's address, as mentioned in the DIN, is of Mumbai, but he actually resides at Pune with his son. The registered address given in the company is of Mumbai, but he is actually residing in Pune. He insisted the CS to send a physical agenda papers to his Nagpur address instead of Mumbai address. Okay. He also requested to provide the air traveling expenses to him for attending the board meeting from the Pune to Mumbai and back. Okay. Dear students, sorry, please take Nagpur as a Pune. Pune. This is a clerical error. So kindly take it as a Pune. Based on the above case scenario, answer the following questions. The first meeting of the board was conducted on 15th Feb 2020. Whether this meeting was convened in time as prescribed under the Companies Act 2013. The first meeting was conducted on 15th February and the date of incorporation was 15th January. Okay, the date company was incorporated on 15th January and the first board meeting was held on 15th Feb. So the question is asking, it is asking whether this meeting was convened in time as prescribed under the Companies Act 2013. We have seen under section 173 that the first board meeting has to be held within 30 days of its incorporation, date of incorporation. So there are 4 options given. The first meeting of the board may be convened at any time. No, it's not correct, because the board meeting has to be held according to within 30 days as per section 173. The first meeting of the board shall be convened within 30 days of the date of incorporation. Yes, it is correct, but we have to read the line. Here the date of incorporation is 15th January 2020 and the meeting should have been convened within 30 days, that is on or before 14th February 2020. Students, we will give a pause over this option because I think this is the correct option, but we have to consider, also have to read option C and option D, because we have to read all the 4 questions carefully, for the 4 options carefully. Might be there are some integrity given in option C or option D. So first we have to read all the options, then we will decide our answer. And even also you have to point out the most appropriate Yes. answer. Sometimes it happens in 1 or 2 answers, you find certain relevant informations there as per the requirement of the section.
but you have to read in line with the question as well as which is the appropriate answer in as per the questions they have asked for. So please read and find out, mark the appropriate answer over here. The first meeting of the board may be convened within a quarter of the date of incorporation. No, this is not a correct option because within 30 days they have to conduct the board meeting. The convening of its first meeting within 30 days of incorporation is not mandatory. No, it is also a incorrect option. It is mandatory. So here the correct option is option B, that is the first board meeting of the board shall be convened within 30 days. If we calculate the number of days, it is we are seeing that 15th January the company was incorporated and the first meeting was held on 15th Feb. But if we count the number of days from 15th January, we will not include the day of 15th January because the date of incorporation will not be included. So we will move from 16 January to number of days we will count. So we will stop at 14th February and 14th February we will also include. So what does this mean? That the date of incorporation will not be included in the period of 30 days. And after the date of incorporation, the next day of the incorporation, we will count the number of days, and after that, if we do the calculation, it will be come out that is 14th Feb. So the meeting will be held by or before or on 14th February. So here the correct option is option B. Moving to question number 2. Whether the meeting of the board held on 25th March 2020 was valid. What happened on 25th March? We will see in the question. The 25th March, yes, there is a third board meeting. What happened in this meeting? In this meeting, the full strength of the board was present except in the meeting of 25th March 2020. In this meeting, only 4 persons were present. So, for quorum point of view, we have to analyze this question. The meeting, we will see that the number of directors, I think there are 14 directors and only 4 directors have present in the meeting, in the said meeting. So, the meeting of the board held on 25th March 2020 was valid since it was convened after the last meeting held on 29th February 20, that is within the period of 120 days as prescribed under the Companies Act. This is a correct option, but we have to analyze the other provisions, other options also. But because maybe there are certain more requirements relating to 25th March, because if we see the option A, it is we are assuming that it is relating to frequency, but the presence of 4 directors was also given. So according to me, I think the quorum related provisions will be applicable on this question. Moving to option B, the meeting of the board was valid since the required quorum was present in the meeting. So we have to make a calculation. What is the calculation? According to 174, if we see, the quorum is 1/3 of the total number of directors. So if we take out 1/3 of 14, that will come out to 4.67, and we have to round off this figure. So if we round off to 4.67, it will come out to 5. But in this meeting, how many directors were present? Only 4 directors were present. Okay, so the quorum is not fulfilled. So the second option, the meeting of the board was valid. No, this is not a correct option. C option, the meeting of the board was not valid since the required quorum was not present in the meeting. This is the correct option. But before writing this correct option, we have to read the option D also. There is no need to have quorum in the meeting. No, this is not a correct option. So in this question, the correct option is option C. So we will see, we cannot ignore all the 4 options. We have to read all the 4 options and we will tick the correct option. We will write the correct option, and you are seeing that these type of questions are very easy. If Companies Act is a very easy subject. If you have the concept clarity, then it is first 3 chapters, rotation of directors, calculation part, like we have done in the contribution to charitable fund and maximum borrowings. These types of questions are very easy. Whether the meeting of the board held on 30th August 2020 was valid. Now we have to see that what happened on 30th August.
30th August, there is a meeting. So we have to calculate. There is no other information provided regarding to 30th August 2020. So we have to read the question, the options. If the quorum in this meeting was present, it may be treated as valid. No, we have to read the other options also. The gap between the previous meetings and the present meeting should not be more than 120 days. Since previous meeting was held on 25th March 2020, held on 1st April, because देखिए, very important. In this question, the information is already given. That is March 2020. The other question was adjourned to 1st April because of quorum. It was not valid. So we are assuming that 25th March meeting has been postponed, has been automatically adjourned to next week, next time, same place and same day. So adjourned meeting was held on 1st April 2020. There is a gap of more than 120 days. Hence, this meeting is not valid. The first meeting was held on 1st April and this meeting is held on 30th August. So yes, this is a correct option because the gap is more than 120 days. But we will again have to pause. We have to read the option C and option D. The gap of more than 120 days between the two meetings can be extended by the registrar. No, this is not allowed. So we will cancel the option C. D. Due to COVID-19, the MCA has extended the period of 60 days and 60 days and it can convene within 180 days, that is till 30th September. Yes, this is also a correct option. That is due to COVID time, MCA has given some certain relaxations to the companies that instead of 120 days, the board meetings can be held within a gap with the gap of 180 days. But it is only for a knowledge purpose. We have not made applicable these COVID related restrictions for your syllabus. Since D is also a correct option, but since it is not applicable, MCA relaxations due to COVID are not applicable for your examinations. So correct option here is only B. In fact, COVID-related these provisions are specific provisions related to that particular situation. So we have to read in line with whatever the this general provision deals with. So in accordingly, we have to give answer in line with the general provision, not with the specific provision related to COVID. As Megha told you that COVID, we have not made any kind of exemptions or relaxations that have been provided during the period of the COVID in any of the implementation or execution of the legal provisions. So kindly go with the regular provisions and then give your answer. Sumit has asked one query, that is 120 days to be calculated from date of adjourned meeting, date of 1st April. Yes, it will be calculated from 25th March because the main meeting will be of 25th March. But in this answer, if we also calculate from 1st April, so 30 days of April, 30 days of May, 30 days of June, 30 days of July and 30 days of August. So this is immaterial with respect to this. Even the adjourned meeting is also considered as the date on which the original meeting is scheduled. Yes. So you should take it note that we will calculate from 25th of March 2020. Original meeting. Yes, from the date of original meeting. I am writing paper in Hindi. Can you provide some guidance in how be the law language in Hindi? I think after completing this case study, Nisha, please guide regarding. Yes, I'm full-fledged with the Hindi language today. So I'm definitely going to speak. So after reading, after completing this question, you just. One of the directors who is actually residing at Nagpur, but his address is recorded with the company and is in the Mumbai. The director wished to receive the notice agenda papers at Nagpur. We are already told you that Pune, instead of Pune, you just please consider is Nagpur. At which address of the notice for board meeting and agenda papers may be sent? The notice or agenda papers be sent as per the wish of the concerned director. If we analyze the sections 173, we will see that the meeting, the notice of the meeting has to be sent to the director at their registered office, at the registered address. So the registered address of Mumbai is given. So the notice has to be sent to Mumbai only. So we have to analyze these four options. The notice agenda papers be sent as per the wish of the concerned director. No, it is not valid. The notice agenda be sent at Nagpur address. No, it's not valid. The notice agenda papers be sent at Mumbai address. This is we have to take a pause here. This is deemed to be a correct answer. D. The notice agenda papers be sent at both the addresses Nagpur as well as Mumbai. There is no such provision given in the Companies Act. There is given, it is only given
that whether at the registered office it has to be given by hand delivery, by post, or by email. So here the correct option is option C. That is, the agenda notice papers be sent at Mumbai only, registered office. Whether such director whose official address is recorded with the company is of Mumbai but actually comes from Nagpur, whether his airfare from Nagpur to Mumbai and back can be provided or reimbursed. Yes, he has travelled from Nagpur to Mumbai to attend the board meeting. Now he is wanting some reimbursement for travel expenses, whether it is allowed or not. The actual airfare from Nagpur to Mumbai and back may be given. No, we have already analyzed that the meeting is holding in the Nagpur, but the director, the notice will be served to the registered address, and the meeting is held in Mumbai only. So there will be no airfare given to the director, because the meeting is held in Mumbai only, and the registered office is of Mumbai only. So the actual fare from Nagpur to Mumbai and back may be given. No, it's not a correct option. The airfare, no airfare should be given to him. However, he may be reimbursed the actual taxi fare from Mumbai address to place of meeting in Mumbai. If the director do not see, the airfare from Nagpur to Mumbai and back can be given if other directors do not object. No, this is also not correct option. D, the airfare from Nagpur to Mumbai and back can be given if approved by the shareholders in the general meeting. No. So correct option is B, that is, no airfare should be given to him. Okay, so taxi car reimbursement is allowed, but airfare it will not be given for the reimbursement point of view. So you will see that these type of questions are very easy if you have read the questions. We have read the provisions thoroughly. So moving to next question, it's of inspection. So before starting this question, please guide. I think he is asking the writing paper in Hindi. सुमित, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, दे मे बी ऑफ हिंदी मीडियम एंड डेफिनेटली दे मस्ट बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. और चूंकि मोस्ट ऑफ द हमारा जो स्पीकिंग का वो होता है मीडियम जो हम ऑप्ट करते हैं, इट इज इंग्लिश मीडियम, कंसिडरिंग इट्स अ पैन इंडिया सेशन गोइंग ऑन. सो यहाँ पर कंसिडरिंग द इश्यूज एज लाइक आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स के लिए हम हिंदी में आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे. बट बिफोर गाइडिंग मैं आपको बस तक कहूंगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता. अरे एक बार तबियत से पत्थर तो उछालो यार. मतलब कि यू नेवर नो व्हाट यू कैन डू टिल यू ट्राई. तो आपको ट्राई करना पड़ेगा. अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो आपका होता है, इवन इट कम्स इन द इंग्लिश मीडियम एट द फाइनल लेवल. सो मतलब समवे यू आर बीइंग रिक्वायर्ड कि आपको इंग्लिश का थोड़ा तो ज्ञान होना ही चाहिए. और मुझे लगता है स्पेसिफिकली अगर आप इस तरह के सेशंस देखते हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से अगर आपको कोई सेशन बताया जा रहा है या आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, ये छोटी सी चीज भी आपको फ्यूचर जो है आपको वो इंप्रूव करेगी. कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इंडिकेट्स दैट. बट यस, समवेयर द कंफर्टेबल लेवल एंड समवेयर मोर क्लैरिटी डेफिनेटली वो आपके जो अपने मीडियम आपने ऑप्ट कर रखा है उससे आएगी. अगर आपने जैसा पूछा कि आपको अगर हिंदी में पेपर लिखना है तो कैन यू प्रोवाइड सम गाइडेंस. देखिए, हिंदी में हो या इंग्लिश में, गाइडेंस टिप्स आर ऑलवेज सेम. उसमें हमने आपको यही बताया कि बेस्ट चीज क्या है, पढ़ने का तरीका. जहां तक है मुझे लगता है वो हम आपको पहले भी बहुत डिटेल में बता चुके हैं कैसे पढ़ना है. कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, चाहे वो एमसीक्यूज के क्वेश्चन आंसर्स हो चाहे फिर डिस्क्रिप्टिव हो. अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो यू कैन इजीली सॉल्व द एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ही चेक करता है. और डिस्क्रिप्टिव आपके आर्ट ऑफ राइटिंग प्लस साथ ही साथ आपके नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट भी टेस्टिंग होती है. और आपका एप्लीकेशन कि आप अपने उस नॉलेज को, आपने जो पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो. तो ये तो आपका पढ़ने के तरीके के ऊपर है, किस लेवल पे जाके आपकी टेस्टिंग होती है और उसी हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई को करना है. और जहां तक बात आती है इसकी कि भाई अब एग्जामिनेशन टिप्स की अगर बात करूं इन शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन आपको सिर्फ मेन जो कहते हैं ना अर्जुन की तरह से मछली की आंख की ही बात बताऊंगी, उसके आगे पीछे की कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगी. तो इसका अब जब हम एग्जामिनेशन टिप्स की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन टिप्स में आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको 15 मिनट जो आपको क्वेश्चन पेपर वितरित करते समय दिए जाते हैं बिफोर स्टार्टिंग फॉर योर आंसर राइटिंग, आपको 15 मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं. उन दैट वेरी मोमेंट ही आपको पहले क्वेश्चन पेपर को आप एक बार
क्विकली रीड करिएगा, फटाफट रीड करिएगा, जस्ट टू मेक योर माइंड कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करना है, ताकि आपका टाइम सेव हो चुके और उसी के ऑर्डर में कि आप नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपको पूरा पेपर करना है। प्लीज मेक इट श्योर कि आप पूरा पेपर करें, अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि आप पूरा पेपर कर पाएं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके आंसर्स की लेंथ, कई बार सब कुछ लिखने के चक्कर में कि भाई हमें तो सब कुछ आता है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये होना है कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आपके क्वेश्चन की, जितना वेटेज ऑफ मार्क्स अलॉटेड है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उसके मुताबिक आप अपने आंसर की सीमा निर्धारित करिएगा। वर्ड लिमिट आपकी उतनी ही होनी चाहिए। मेक इट श्योर दैट थिंग। तो ये एक चीज है। और आप साथ साथ आप आंसर्स में थोड़ा बहुत यूं कर सकते हैं टू ड्रॉ द स्पेशल अटेंशन ऑफ द पेपर्स चेकर कि आपको किस चीज पे मेन फोकस या आपको अटेंशन ड्रॉ करना है। देयर यू कैन कम अप विद अंडरलाइनिंग। आप अंडरलाइन कर सकते हैं किसी मेन पैराग्राफ, मेन कोई पॉइंट है अगर किसी प्रोविजन का उस पर जिसपे मेन आपका आंसर बेस्ड है, आप उस चीज को पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने आंसर्स को छोटे पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। और इस तरह से आप ध्यान रखें कि आपका क्वेश्चन में टू द पॉइंट आंसर हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उतनी ही वर्ड लिमिट के हिसाब से उतना ही आंसर लिखिएगा। आपको पूरा पूरा प्रोविजन एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, ऑफकोर्स लीगल टर्मिनोलॉजीज दे आर वेरी डिफिकल्ट, यू नो, लिखना क्या उसको बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या होता है कि समवेयर यू नीड कि आप उसकी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में ही याद कर लीजिए, क्योंकि इतना चलता है लॉ में। आप एज इट इज, कुछ होती है टर्मिनोलॉजीज हिंदी में आपको टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसको लिखने में भी टाइम लगता है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली just remain you can just do remember what you can call that terminology in English। आप इंग्लिश में करके उसको आप लिख सकते हैं बाकी, लेकिन आपका पूरा बाकी हिंदी मीडियम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई क्वेश्चन हिंदी में लिखा, कुछ इंग्लिश में लिखा, या कुछ आधा मिक्स इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जिसमें हाँ जिसमें हिंदी और इंग्लिश है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू लीगल टर्मिनोलॉजीज आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। रेस्ट योर आंसर शुड बी रिमेन इन द सेम मीडियम विच इज ऑप्टेड फॉर। सुमित, आई सपोज दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। Rest wherever you feel any sort of the issue or problem in understanding of any of the concept, just let us know. We will definitely take care. Yes, Megha, you may proceed. Yes. Now can we move to next chapter? Inspection. Yeah. Yes. Moving to next chapter. If you have any problem regarding first in chapter 1, chapter 2, chapter 3, you can please send as quickly as possible. We will cater you. Then inspection. This is a chapter 4. This is if we see the section wise weightage, section 1 we has completed. Section 1 may there are 3 chapters, and now we are moving to section 2nd. On these chapters, section 2nd chapters covered in the section 2nd, the questions on ENS type questions can also be asked. So this section 2nd is your inspection, compromise and operation is also very important from the examination point of view. So in case of company, the shareholders and management are different. The shareholders elect the directors to run the company. The directors are given full powers. They are given the powers relating to management and the affairs of the company. They have to conduct the day-to-day affairs of the company. But sometimes what happened, the directors abuse their power. They misconduct and they try to make benefit out of the transactions done at the name of the company. So what will happen for the transactions? For that cases, the Companies Act 2013 has given power. The companies has given power to the company, to the shareholders, that the shareholders, the members of the company can apply, can go to central government for their interference. Though central government can interfere through inspection, they can do the investigation of the company and they can make the inquiry of the company. So this chapter is from section 206 to 229 of the Companies Act. And after reading, we have broadly given all the many flow charts, many tabular presentation in this chapter. So there are many provisions relating to your inspection, investigation and inquiry. Then there are the powers of registers, that what are the register can also interfere in the company. How? Though this is given the power of inspectors. So sometimes the registrar and the central government appoint inspectors. So the inspectors can come, they can take the books and evidences with him, they can summon the employees of the company, they can summon the past employees of the company. So the powers of registrar, inspectors and central government are provided in your chapter. So just go through it. Then the
establishment of serious fraud investigation office and its objectives. Sometimes the central government appoints the SFIO. There is a power, special power given to SFIO. So what are the special powers given to SFIO and what are the objectives? So kindly go through these provisions thoroughly. Then what are the duties when the inspector comes? When there is a notice from the central government, then we have to conduct the inspection investigation. So what will the directors and employees will do? They have to come, they have to fulfill the obligations, they have to do their duties, they have to call. So the duties of directors and other employees during inspection, inquiry and investigation are given. So they have to fulfill, they have to do whatever the inspector is telling them, they have to do as per their wish. Inspection report and action to be taken out. Some other member has written a complaint of the directors to the registrar, the central government. They have appointed the inspectors. The inspectors have conducted the inspection investigation. The directors and the employees have helped them. But after that, the inspector will make a report. So what are the format? What are the points he can make? How he can make the report? So it is given and action to be taken on it. So central government, whenever the inspector is giving his report to the central government, so what are the different actions, what are the different orders the central government can do? So it is given in that section, in that chapter. So on the basis of inspection report, on the basis of investigation inspection, the punishments it given, the central government or registrar may levy some punishment in the form of penalty or in the form of fine, in the form of imprisonment, and they have to give, they have to applicable on the directors or the officers as per their provisions. So this is the little brief framework of the chapter 4. So you have to read the chapter thoroughly, and all the this is a mainly theoretical type of provisions are given, but it's very interesting. एक्चुअली प्रोसीजरल पार्ट है कि आप Yes. कैसे इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? जनरली क्या होता है, जो पावर दी गई है कंपनीज एक्ट के अंदर फॉर दिस पर्टिकुलरली फॉर इन्वेस्टिगेशन द अफेयर ऑफ द कंपनी, आप देखेंगे ये मिली हुई है रजिस्ट्रार को, इंस्पेक्टर को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरडी को एंड ट्रिब्यूनल को. दीज 5 आर द अथॉरिटीज टू whom the power has been delegated with respect to the inquiry or inspection related to the affairs of the company. तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखिएगा. टू whom what sort of the power has been provided, किसको इंस्पेक्शन की पावर है, रजिस्ट्रार को है, और किस कंडीशंस में है, किन केसेस में है, एंड व्हेन इंस्पेक्टर कैन गो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, स्क्रूटनी और इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. आपको ये सब कंडीशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर क्या हर एक अलाइंड है. इट इज इन अलाइनमेंट. कि पहला आपको सबसे पहले क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार का रोल है, सबसे पहले वो होता है कि वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन के लिए उसको पावर है कि वो क्या कर सकता है. फिर वो इंस्पेक्टर अपॉइंट करता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट किस केस में कर सकती है. तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. इसलिए काइंडली रीड द प्रोसीजरल in line with one in the other section so that you can easily link each and every procedure easily, and so you'll be able to understand the procedure part of this particular procedure under the Companies Act. So moving to question based on this chapter. A manufacturing company with 2 of its directors and the CFO were engaged in malpractice and falsifying accounts. Some of the employees who were also members of the company were in doubt that serious fraud was perpetrated by them. They decided to file an application with the central government under section 212 of the Companies Act 2013 for carrying out an investigation into the affairs of the company by SFIO. 1,600 of the 2,000 members passed a resolution for investigation by CG into the affairs of the company. The central government accepted their application and assigned its investigation to SFIO. The 2 of the directors believed that the application was not tenable since it was not filed by 90% of the members of the company. So now we have to calculate, we have to go to the provision. What does the provision says about it? So what is the requirement of this question? Circumstances under which the central government can carry out an investigation into affairs of the company, whether the central government under this company, the central government can carry out investigation or not, and if it is allowed, the investigation can be conducted, application can be filed to the central government. The second part will be whether the application filed by the members is tenable or not. So we will see that what are the circumstances when central government can carry on investigation. It is provided in the section 212 that
without prejudice to the provisions of section 210, where the central government, on receipt of a report of the registrar or inspector under section 208, the registrar can make a report of the company or inspector. So if the registrar is sending his report to the central government, or on intimation of a special resolution passed by the company that its affairs are required to be investigated. Passed by the company means passed by the shareholders. If the shareholders in the general meeting pass a special resolution that its affairs, they are requesting the central government that our affairs are to be investigated, or in the public interest, maybe the company is involving in some public interest and the directors are in malpractices. So the central government in the public interest can also do the inspection, investigate the company, or on request from any department or the central government or the state government. Might be some directors are of central government or state governments are into that company. So on the request, on the basis of request from central government or state government, the central government can order for investigation. It's of the opinion that it is necessary to investigate into affairs of the company. The central government may, by order, assign the investigation into affairs of the said company to SFIU. So first question we have seen that whether the central government can investigate, can order for investigation of the company. So these are the 4 conditions provided in section 212, that in these conditions the central government can order for the investigation. Then moving to question number 2, the application was filed by 1600 members out of 2000 members, that the application is tenable or not. In the instant case, 1600 of the 2000 members passed a resolution for investigation by the central government into the affairs of the company. Hence, the application filed by the members is tenable as it was passed by 80% majority. If we take the percentage of 1600 out of 2000, so the percentage will come out to 80%. And the section specifies that on intimation of a special resolution, that is 75% majority. And if we see that 212, it's given on intimation of a special resolution passed by the company, its affairs. So special resolution की requirement कितनी होती है? It's only 75%. So if we take the calculation of 2000 multiplied by 75%, so it will come out to 1500. And here the application is filed by 1600, so the condition of special resolution is passed, so the application is tenable. And the central government may assign the investigation into the affairs to the SFIU. So these type of questions are very easy. If you see that these type of questions come into the examination, but only thing required from you is that you have to remember some provisions. जो provisions है, that is to be in your mind thoroughly. And कौन सा section आपको कहाँ लगाना है ये आपको पता होना चाहिए. जैसे इसमें SR था, रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार पब्लिक इंटरेस्ट, तो आपको SR से ही पता चल जाना चाहिए था कि स्पेशल रिजोल्यूशन वी हैव टू पास, स्पेशल रिजोल्यूशन की मेजॉरिटी 75%. तो these type of questions are very simple, but your concept clarity is a must for undertaking for these type of questions. Now I think this is relating to ऑपरेशन. तो मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर. अब भाई आपको यहाँ तक तो बता दिया क्या क्या करना है, लेकिन जी हाँ आप इतना ध्यान रखें कि हर एक का अपना ओन स्टाइल होता है लर्निंग का. प्लीज अडॉप्ट दैट योर ओन स्टाइल, ठीक है ना, क्योंकि कहते हैं डोंट चेंज विद द चेंज बट चेंज बिफोर द चेंज. तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा. आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबको देखकर कि सब बदल रहे हैं तो मैं भी बदल जाऊं. जस्ट अडॉप्ट योर ओन वे ऑफ लर्निंग एंड स्टाइल. Now moving to the next part of the question, as of now we have completed till inspection. Now the further chapter question that we are taking here is with respect to the operation and mismanagement. This is also the one of the important chapters. You know, generally ये देखा जाता है कि companies में कभी-कभी ऐसा होता है कि there is something which some act of the companies are being in such a manner, somewhere you oppress or you somewhere you just you hamper the interest of the stakeholders. It happens by the act that is being performed by the company. So generally this is being dealt under the operation and mismanagement of the company. This is chapter 16th of the Companies Act 2013, and here we shall be discussing from provision 241 to 246 of the Companies Act 2013. यहाँ पे जो प्रोविजंस बताए गए हैं, दे आर जनरली टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ दोज हु आर इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. यानी कंट्रोल कौन करता है कंपनी को?
डायरेक्टर्स जो मेन आपकी वहाँ की कंडक्टिंग बॉडी है, मैनेजमेंट है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है मेन उसको कंट्रोल करते हैं, पर कई बार वो ऐसे ऐसे एक्ट कर लेते हैं या कोई इस तरह से मटेरियल चेंज हो जाता है मैनेजमेंट में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है दैट इज बीइंग अफेक्टेड, नॉट ओनली ऑफ शेयर होल्डर्स बट ऑफ मेंबर्स ऑल्सो, और इवन उसकी वजह से somewhere the interest of the company is also being itself affected. So in that case यहाँ पे ये provisions देखे जाते हैं how to protect the interest of the shareholders. तो if you see there are relevant section, आपने देखा सिर्फ 6 ही कितने आप 241 246 यानी 7 sections ही हैं अगर आप उठा के देखेंगे तो, ठीक है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, इन सेक्शंस में आप ये देख रहे हैं जो सेक्शंस हैं इसमें आपको बस खास इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शंस अगर आप देखेंगे वो सेक्शंस 241 जैसे आपका हो गया कि भाई कब आप एनसीएलटी में जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, 244 होगा कि कब कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, प्लस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द एनसीएलटी विद रिस्पेक्ट टू एनी एप्लीकेशन फाइल्ड on this operational mismanagement that is being dealt in 242. तो आपको सिर्फ 3 सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि that you'll be ignoring the other rest of the section. That should not be there. So you have to read everything, but yes, in certain chapters there are some of the important provisions that you should be thoroughly read with, so that because generally the questions are being touched or from asked from these particular provisions only. तो जो 241 है हमारा अगर हम देखें तो it provides that any member can apply to the NCLT if he complains that the affairs of the company are being conducted in an oppressive manner or prejudicial to the public interest or against that particular member. तो आपका 241 मेंबर आपका 241 सेक्शन लगता है। हालांकि हम हमेशा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सुनते आए कि रूल ऑफ माइनॉरिटी रूल ऑफ मेजॉरिटी का अब तक हम सिद्धांत सुनते आ रहे थे, वो एक बहुत ही पुरानी केस लॉ पे बेस्ड था फॉस वर्सेस हर बॉटल का, बट नाउ सिंस आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दिस concept has little bit changed, not has become a rule of minority also, because somewhere they are safeguarding the interest of the minorities also. अब ये भी हो गया है, पहले ये था सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशंस में आपके कुछ एक्सेप्शंस थे जहां पे रूल ऑफ मेजॉरिटी नहीं लगता था, बट नाउ कंसिडरिंग कि भाई आपके माइनॉरिटीज का भी इंटरेस्ट सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो समवेयर दे आर नाउ शिफ्टेड देयर पार्ट ऑन फोकस ऑन दिस माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑल्सो। सो इसलिए अब हमें जो ये पुराना जो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन है रूल ऑफ मेजॉरिटी को अब हम आज के टाइम में कंपनी 2013 पे एप्लीकेबल नहीं करते हैं, राइट। जिससे आपको देखना चाहिए एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 244 की भाई कौन मेंबर्स हैं जो फाइल कर सकते हैं, तो उसमें आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि हु और आर द एलिजिबल मेंबर्स हु कैन फाइल द एप्लीकेशन. So let's try to understand that concept with the help of an example over here. You can see that here question number 7 is there. That there's a limited company, hybrid limited company, which has issued share capital of rupees 8 lakhs. ठीक है, जिसमें 80,000 के शेयर्स थे, 80,000 शेयर्स थे ऑफ रुपीज 10 ईच. कंपनी में 38 मेंबर्स थे. सम मेंबर्स हु फेल्ट ऑप्रेस्ड बाय सर्टेन डिसीजन ऑफ द बोर्ड, तो दे सबमिटेड अ पिटीशन बिफोर द ट्रिब्यूनल सो दैट दे कैन गेट द रिलीफ अगेंस्ट द सेम. तो डिटेल्स बता रखी है आपको मेंबर्स को हु ऑल हैव सबमिटेड द पिटीशंस. तो यहाँ पे बता रखा है मेंबर ए वाज होल्डिंग 1000 shares, member B 2500 shares and member C and D were holding 3500 shares. अब आपने देख लिया ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यू शुड फर्स्ट भाई अपने आपको इन्फॉर्मेशन से अच्छे से रूबरू करिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दी हुई है इन लाइन विद द गिवन इन्फॉर्मेशन और रीड व्हाट इज बीइंग रिक्वायर्ड टू सॉल्व, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, दैट इज वेदर द पिटीशन इज मेंटेनेबल. तो अगर आप लॉ पढ़ेंगे 244 जैसा मैंने आपको बताया, जहां पे ये बताया गया है कि कब मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, तो इसमें आप देखेंगे अगर सेक्शन 244 है, दो बातें गई हैं. एक तो उस केस में जहां पे कंपनी इज हैविंग द शेयर कैपिटल, उस कंडीशन में क्या रिक्वायरमेंट है, अदर इज द केस वेयर द कंपनी इज नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल. तो कंपनी हमारा जो क्वेश्चन है, चूंकि हम बता रहे हैं कि उसने इतने शेयर्स इशू किए, तो वी कैन इजीली मेक इट आउट दैट कंपनी इज हैविंग अ शेयर कैपिटल. विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पार्ट वी नीड टू गिव अवर आंसर. तो यहाँ पे बताया कि जो मेंबर्स दोज हु आर एलिजिबल फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, दे नीड टू रीलुक द रिक्वायरमेंट आइदर 100 मेंबर और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, और अगर आप देखेंगे नीचे इसमें दिया हुआ है मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. पर देखो तीन चीजें बताइए, तीनों में ये बोला विच एवर इज लोवेस्ट. आपको ये चीज को पकड़ना है. कई बार अभी कुछ बच्चे हमारे पास गाइडेंस के लिए आए थे एंड सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन हैज आस्क्ड इन द एग्जाम. सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, स्टूडेंट्स ने ये वाली टर्म मिस कर दिया कि विच एवर इज लोवेस्ट. उसने ये तीनों रिक्वायरमेंट मेंशन करी बट ही फॉरगेट टू मेंशन विच एवर इज लोवेस्ट, जो कि मेन रिक्वायरमेंट है आपको इस प्रोविजन के अंदर.
तो आपको वो मेंशन करना है। फिर आपको बताना है कि जहां पे जॉइंट शेयर होल्डिंग होती है, देयर दैट पर्सन शैल बी काउंटेड एज 1 मेंबर। ओके, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जॉइंट शेयर होल्डिंग की बात कही गई है, दैट इज व्हाई वी नीड टू एक्सप्लेन दिस पार्ट इन द आंसर ऑल्सो। नाउ इन लाइन विद द लीगल रिक्वायरमेंट, नाउ लेट्स टेक अप व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। आपको बता रखा है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो आपने देख लिया कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इट इज ऑफ अमाउंट 8 लाख। आपका इतना इक्विटी शेयर कैपिटल है, 38 मेंबर्स ने उसको होल्ड कर रखा है। फिर आप ये बताते हैं कि कैसे कैसे मेंबर्स कितने हो रहे हैं। तो नंबर्स ऑफ मेंबर्स जिन्होंने पिटीशन फाइल किया, वी आर टेकिंग कंसिडरिंग 3, not 4, because C and D are jointly taken over here. So that is why member A, B and combinedly C and D will be considered as 3 members. तो ये आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 3, जिन्होंने पिटीशन फाइल की है। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द मेंबर्स मेकिंग द पिटीशन ₹70,000। कैसे? अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, आप देखोगे इन्होंने कितना होल्ड कर रखा है। अगर आप करेंगे तो 7,000 शेयर है, उसको आप 10 से करेंगे तो आपका 70,000 का आपका ये आ गया। 70,000 शेयर्स उन तीनों मेंबर्स ने होल्ड कर रखे हैं। तो पिटीशन आपका वैलिड कब माना जाएगा? जब आप तीनों कंडीशन देखेंगे, उसमें जो लीवेस्ट है, अगर कोई भी एक कंडीशन कंप्लाइड हो रही, क्योंकि और यूज्ड है अलोंग विद एवरीथिंग, अगर कोई भी एक कंडीशन कंप्लाइड हो रही, तो दैट मींस द पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन द एनसीएलटी। तो यहाँ पे आप देखिए 100 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट इज नॉट देयर, क्योंकि 3 ही मेंबर हो रहे हैं एज पर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। क्योंकि 100 की रिक्वायरमेंट है पर 3 ही हो रहे हैं एज पर क्वेश्चन, तो आपका ये तो खत्म हो गया। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है। सेकंड, आपने जब 110 तक 38 निकाला, तो दिस काउंटिंग टू बी 3.8, इसको हम राउंड ऑफ करके 4 ले रहे हैं, तो हमारा वो भी नहीं है। ठीक है। देन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेंबर्स होल्डिंग ₹80,000 शेयर कैपिटल, अगर आप वो भी 110 करते हो 8 लाख का, तो अगेन यू विल सी वी आर हैविंग ओनली द शेयर होल्डिंग ऑफ 70,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो भी हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। So what you can make out, neither of the condition of the eligibility criteria has been met with under section 244 of the Companies Act, and therefore the petition is not maintainable. Clear cut answer देना, you does not require to lay down many stories. Only क्वेश्चन किस नेचर का, किस नेचर की कंपनी है, उस हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। अगर यही आपका होता, सपोज कंपनीज हु हैव नॉट, मतलब जिसने कभी शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते, अगर उसके रिस्पेक्ट में, तो वहां पे एटलीस्ट 20% ऑफ आपको वो देखना पड़ता है मेंबर्स, वो जीते एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को चेक करना पड़ता है। तो दैट इज अ डिफरेंट केस। बस कंसिडरिंग कि वॉट एवर इज गिवन विद इन द लाइट ऑफ दैट ओनली यू हैव टू गिव योर आंसर। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज मतलब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट। और आपने देखा कि जो एनसीएलटी होती है, जनरली एनसीएलटी का वाइड पावर्स होती है अंडर सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू ब्रिंग इन वाइंडिंग अप। ओके, तो नहीं वो तो है ऑपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन ओनली। तो मैं बता रही कि वाइंडिंग अप, सॉरी, इन एनसीएलटी जो होती है, दे हैव द पावर टू लुक इनटू द इशू ऑफ द ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो उनके पास बहुत वाइडर पावर होती है टू डील विद द इशू एंड टू ब्रिंग एन एंड टू द मैटर wherever they have received the application complaining the operation and mismanagement. So NCLT will hear the matter and pass the suitable order, and procedure to be followed after NCLT issues order is also specified in section 242 of the Companies Act. उसमें दिया हुआ है कि आपको कैसे उस मैटर को क्या क्या ऑर्डर आप पास कर सकते हैं, एनसीएलटी क्या डिसीजन ले सकता है इन दैट केस, और साथ ही साथ एनसीएलटी के पास वाइड पावर्स होती है कि वो रिलीफ क्या दे सकता है कंपनीज को या मेंबर्स को, those who have been suffering because of this operation and mismanagement in the company. Now moving to the next important question. Yes, it's relating to winding up. Companies Act 2013 contains provisions relating to winding up the companies. Now, with the enforcement of IBC, many provisions have been omitted from the winding up provisions. But very briefly, we will see that what you have understood winding up क्या होता है. Winding up means winding up of the company, its liquidation. So, what are the circumstances in which the tribunal can order for winding up of the company? Sometimes it's just an equitable ground, or the company has defaulted in payment in filing the annual returns or financial statements for last 5 years, or in the public interest or in the national interest, the company can be wound up, or by passing, if the members by themselves wants, by passing a special resolution that the company be wound up, then the central government, the NCLT, can order for its winding up, or sometimes the registrar can also make an application to the this NCLT for winding up. So who can file the winding up petition? It's covered under section 272. The petition for winding up can be made by the company itself. We have seen in the above.
that the company can make the winding up petition, or sometimes the contributory or contributories of the companies, and all or any of the persons specified above, or the registrar. Sometimes they are seeing that the financial statements and the annual returns have not filed for the last 5 years. So sometimes the registrar can also file a petition for the winding up, or any person authorized by central government in that behalf. And in case the affairs of the company conducted against the national interest by the central government, the central government can also file a petition to the NCLT. So what type of orders NCLT can give? NCLT can give dismiss it. Sometimes they do not find that the petition is maintainable, so they can dismiss the petition with or without cost, or they can make any interim order that instead of winding up, they can do some interim arrangements into the company. So the NCLT can make some interim orders, or it can appoint a provisional liquidator. Before winding up, the provisional liquidator is appointed to sell off the assets and liabilities, to pay off the life creditors. So provisional liquidator is appointed, or it can order for the winding up of the company, or any other order as it thinks fit. So our study material contains many provisions, but before IBC there were many provisions, but after the enforcement of IBC, many provisions have been omitted. So winding up provisions are procedural in nature, and many times good questions are framed on it. So kindly go through the study material thoroughly, because on the single line of the study material sometimes a question is framed. So winding up chapter is also important, though it's forming the section 3 of your skill wise weightage, section wise weightage, and only K&C based question and application oriented based question will come from this. No evaluation and synthesis type questions will come from the chapter of winding up. So moving to, we'll discuss one question from this chapter. OTP Limited was ordered to be wound up by the tribunal. A provisional liquidator for the purpose was appointed. However, some parties want to pursue certain legal proceedings against the company. The company contends that on winding up order being passed, all suits and other legal proceedings comes to an end. So winding up order has already been given by the tribunal, and provisional liquidator is appointed. Some parties want some legal proceedings over the company, but the company is defending that since the winding up order has passed, so no other legal proceedings can be undertaken. So advise the parties as per the Companies Act 2013 on the contention of the company, that whether the contention of the company is valid or not. If we see that section 279 prescribes, section 279 says that when a winding up order has been passed or a provisional liquidator has been appointed, no suit or other legal proceeding shall be commenced, or if winding up at the date of order shall be proceeded with by or against the company except with the leave of the tribunal and subject to such terms as the tribunal may impose. But there is a proviso also, provided that any application to the tribunal seeking leave under this section shall be disposed of by the tribunal within 60 days. If we sought for some leave from the NCLT, so it has to be disposed by the NCLT within 60 days. So in the given question, some parties of OTP Limited, which was ordered to be wound up, want to pursue some legal proceeding against the OTP Limited. So in the light of the facts of the question and provisions of law, the parties which want to pursue certain legal proceedings against the company can do so only with the leave of the tribunal. They have to apply to the tribunal. They can sought for leave from the tribunal and subject to such terms as the tribunal may impose. So this is the conclusion of this answer. So you have seen the section 279. We have to specify the section 279 first. Then there is a proviso is also given. First of all, it was given that it will not be legal proceedings cannot be undertaken. But since the proviso is given, if the leave is sought from the NCLT and the NCLT have to dispose within 60 days, so the OTP Limited, the facts of the parties which wants to pursue certain legal proceedings can go to NCLT for leave of leave, and if the NCLT allows, they can impose. Even we have received the query also, Megha, that first question, let's see that he is asking with respect to the round off, that shall always be upper round off. If 33 members, then 3.3 should be, or 3 or 4. Actually, it is just
here we should consider normal rounding of the numbers because nothing has been specified with respect to the nearest one. So we have to take it the So here we'll take the upper limit according to the mathematics. You should the nearest. Okay. Then one more question is left. In question 6, can we write write the special provision, special resolution condition? Since it's the only relevant to the question, लिख it's सकते wanting हैं, on हाँ. about 212. 212 Yes. में there are 4 conditions. Yes, you can write straightly that according to 212, if the SR is passed by the members, so you can write. फिर आपका इसमें क्या है मैम, हाउ टू मेमोराइज एग्जैक्ट सेक्शन नंबर इन लॉ टू राइट. देखिए ये तो हाँ सौरभ सरकार, यस सौरभ, इट्स अ नाइस थिंग एंड इट इज द प्रॉब्लम व्हिच इज जनरली बीइंग फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज सेक्शन नंबर को याद करना इज नॉट दैट इजी. तो अब उसके लिए तो भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बाद बनेगी नहीं. अब आपको क्या करना है प्रैक्टिस करने के लिए, सबसे बढ़िया आइडिया हम आपको ये देंगे. जब भी हम आपको, अभी आपने देखा होगा हमने जितने भी सेक्शंस आपको पढ़ाए हैं, वी हैव जस्ट ऑल्सो मेंशन द सेक्शन नंबर. दिस इज जस्ट बिकॉज कि हम जैसा पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं वो हम रिटेन करते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना है कि इन ऑर्डर टू बी आप उस चीज को याद रखें, या आपको और भी इसके अलावा भी आपको बहुत से सेक्शंस याद करने हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं. आप वेबसाइट, आप इतना मोबाइल वगैरह अक्सर देखते होंगे, तब मोबाइल पे जाइए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या गूगल पे जाइए, कहीं भी जाके आप डायरेक्ट आप वहाँ पे डाउनलोड ई बुक से भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं. अगर अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम एनी बेरेट की स्टार्टिंग में आपको खोलेंगे तो सेक्शन नंबर्स की लिस्ट आ जाती है जिसमें आपका लिखा होता है कि कौन सा सेक्शन नंबर एंड डील्स विद विच ऑफ द, आपकी हेडिंग आ जाती है किस प्रोविजन को डील करता है विद हेडिंग. तो आप बस उसका पेज ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, 3-4 पेज का होता है नॉर्मली आपके स्टार्टिंग में, वो आप अपने पास रखिए. एंड व्हेनेवर यू गेट द टाइम यू सिंपली रीड द सेक्शन नंबर एंड द हेडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन. आप जब उसको हेडिंग के साथ पढ़ेंगे और जब भी आपको टाइम लिखे, और आप एक दिन का ये टारगेट बना के मुझे 10 प्रोविजन पढ़ने हैं, अगर आप एक दिन में 10 करके 10 दिन भी करेंगे तो आप 100 प्रोविजन पढ़ लेंगे. तो कहते हैं कि वो बूंद बूंद सागर बनता है, और बनेगा, बिल्कुल बनेगा. लेकिन आपका यही है कि बस आपको उसको निरंतर, फिर आपको उसको यूज टू करने के लिए, आपको याद रखने के लिए जब भी आपको टाइम मिले उसको रिवाइज जरूर करिएगा. तो यही है कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही आप उसको रिटेन कर सकते हैं. अदरवाइज आप पढ़ेंगे नहीं और आप बीच में छोड़ देंगे और आप सोचेंगे आपने एक बार पढ़ लिया और आपको याद हो गया, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू. तो एवरी टाइम यू नीड टू रिवाइज इट. तो whenever you get the time, you just keep the copy of that particular 5 to 6 page of the index of any barrack. उसी से आप अपने पास रखिए. आप while traveling or while any time when you feel boredom कि चलो यही पढ़ लूँ, तो यू कैन रिवाइज. जब आप एक बार पढ़ चुके होंगे सारे सेक्शन, तो फिर तो आप बैठ के 10 मिनट में आप सारे सेक्शंस को एक बार पढ़ सकते हैं. और हर मॉर्निंग में एक बार उठ के एक बार पढ़ लीजिए, फिर देखिए कमाल ही कमाल है. ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं जस्ट कि आप भी अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए, सो दैट यू कैन स्टिल मोर फोकस ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू इन द कमिंग स्लाइड्स. एंड let we may also take a glass of water so that we can also come back to you.
हिमल हिमल सो जा लाइव तो नहीं आ रहा ना ये? हिमल चलो ब्रेक और मिल गया हमें, कॉल कर लो। हिमल ठीक एक मिनट ठीक है स्टार्ट अच्छा स्टार्ट कर ठीक स्टार्ट करें। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम अगले मूव करते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमने जहाँ तक पढ़ लिया उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मिसलेनियस चैप्टर का। मतलब आते तो और भी चैप्टर्स है, बट दीज आर द चैप्टर फ्रॉम विच जनरली द क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड in the examinations. So miscellaneous chapter we are covering many important concepts related to nidhi companies or related registered valuers, or it will be related removal of name of companies from the register of members. जब हम रिमूवल ऑफ नेम ऑफ रजिस्टर मेंबर्स की बात करते हैं फ्रॉम दिस रजिस्टर ऑफ कंपनीज, तो आपने देखा होगा कि जनरली हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट पे इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, यानी दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। तो व्हाट इज मतलब इफ यू सी दिस चैप्टर यू विल फाइंड दैट कि हमने अभी तक पढ़ा कि भैया कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी होता है, तो कहीं ना कहीं डेथ जो होती है इट इज ऑल्सो इनएविटेबल। मतलब अगर कोई चीज आई है तो वो जाएगी भी। इफ आफ्टर बर्थ डेथ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट part of the nature. So similarly what happens, many companies have to be closed down after some times due one or the other reason. So in that case what happens, the provision has been made under the Companies Act under section 248 of the Companies Act to remove the name of the companies from the register of the companies maintained by the registrar of companies. So section जो 248 of the 2013 है वो provision देता है to remove the name of the company, कि आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हु ऑल कैन मेक एंड अप्लाई फॉर द सेम फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम, एंड इफ सपोज वंस द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनीज हैज बीन मेड इनटू द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, यानी एक बार अगर स्ट्राइक ऑफ नेम हो गया देन व्हाट कैन इट रिस्टोर बैक इट्स नेम। तो दिस इज ऑल इट इज गिवन इन द चैप्टर। तो यू मस्ट बी सीइंग जो रिमूवल ऑफ नेम्स का जो कंसेप्ट इट सेज कि जनरली आइदर इट मे बी इनिशिएटेड आइदर बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार खुद इनिशिएट कर सकता है फॉर रिमूवल, और ऐसा तब होता है जनरली जिन पर्सन कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ द कंपनी दे लूज इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी आइदर ड्यू टू एनी कॉज, वेदर मे बी ट्रेवलिंग अब्रॉड, या तो शिफ्ट हो गया है या ऑन एंड ऑफ ट्रेवल करते रहते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द बिजनेस। तो इन दैट केस ही लूजेज ऑल द इंटरेस्ट, या फिर ऐसा होता है कई बार किसी की डेथ हो गई है तो दैट बिजनेस इज नॉट बीइंग पॉसिबल टू बी कैरिड ऑफ। तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि जो डायरेक्टर्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू डू रेगुलर फाइलिंग विच इज रिक्वायर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। वो नहीं करते हैं रेगुलर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते, ऑडिटेड रिटर्न वगैरह ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह फाइल नहीं करते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है कि आपका कोई भी आप कह सकते हो कोई भी बिजनेस जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन ही नहीं हुआ है कंपनी का, तो in that case what happens, the provision has been made for removing name of the company from the register of companies by the registrar himself. Suo moto registrar will take a call and he may remove the name of the company. पर कई जगहों पे ऐसा भी इसका एक्सेप्शन भी है जहाँ पे रजिस्टर सियो मोटो नहीं कर सकता इन केस ऑफ सर्टेन कंपनीज। तो इन दैट केस आपको पता अगर लिस्टेड कंपनी हो या फिर आप कह सकते हो कि वो कंपनी वैनिशिंग कंपनीज है, तो उन केसेस में सियो मोटो रजिस्ट्रार कैन नॉट टेक अ कॉल टू रिमूव ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। और दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी में इटसेल्फ रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वो रिक्वेस्ट कर सकती है कंपनी खुद, तो वहां पे हो सकता है। प्लस इसके लिए क्या वो नोटिस दिया जाता है रजिस्ट्रार फॉर रिमूवल ऑफ नेम टू द डायरेक्टर एज वेल एज कंपनी, कि दे वो अपने रिप्रेजेंटेशन दे सके कि भाई अगर अंतिम में रिवील देयर इंटेंशन वेदर दे वांट टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी और नॉट फ्रॉम द रजिस्टर। तो ये चीज हो सकती है। एंड वंस मतलब आप ये समझ लीजिए वंस इट बीइंग दैट पीरियड गिवन इन द नोटिस इज बीइंग एक्सपायर्ड, जो भी नोटिस में पीरियड होता है अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो रजिस्ट्रार विल देन स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एंड शैल पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट, and the company stands dissolved from the date of publication in the official gazette. ठीक है ना, आपको पता चल गया कि कैसे होता है कब होता है, ये हमने आपको बता दिया। जो भी कंडीशंस है कि किन किन कंडीशंस में कंपनी कर सकती है, किन कंडीशन में रजिस्ट्रार अप्लाई कर सकता है, दैट ऑल टू बी रेड इन डेप्थ व्हाइल गोइंग थ्रू द लीगल प्रोविजंस। तो प्लीज लीगल प्रोविजंस को पढ़िए
और उस चीज को समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस टॉपिक पे अक्सर आते हैं। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इस वाले पार्ट में जो ये हमारा मिसलेनियस चैप्टर में से वन ऑफ द टॉपिक है ये निधि कंपनीज, इट इज ऑल्सो बीइंग रेगुलरली टच इन द एग्जामिनेशन एंड सिंस अमेंडमेंट हैज बीन रिजल्टेड इन निधि कंपनी। अगर आपको पता है, कल मैंने आपको अमेंडमेंट्स बताया था, इन अमेंडमेंट्स हैज स्पेसिफिकली टोल्ड यू कि आपका निधि कंपनी में अमेंडमेंट आया हुआ है, अमेंडमेंट निधि रूल्स अमेंडमेंट 2022, ठीक है ना। तो आपको वो देखना है, क्योंकि उसमें आपके काफी सारे रूल्स में जो सब रूल्स हैं, काफी सारी चीजों में चेंजेस है, एंड इट मे बी पॉसिबल समवेयर इन द एग्जामिनेशन दे मे ask you on this amendment portion also. So please go and update yourself with this amendment part of the Nidhi rules. Now taking up one of the question in order to more understand ki how the questions are being asked in this particular topic and how you can give the answers in line with the requirement of the section. You can see the question is that here there is a company B Pharma Limited which is registered in India for last 5 years. 5 साल से वो कंपनी ऑलरेडी है इन एग्जिस्टेंस, एंड फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल वो कहता है इट इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस एंड हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स and neither it has made any significant accounting transaction for last 2 financial years. अब जो डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थे, दे वर इंटेंडिंग कि भाई लेट्स अप्लाई टू द आरओसी टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी, क्योंकि जब आपकी कंपनी ऑपरेशन में नहीं है, बिजनेस नहीं कर रही, तो उसको ये स्टेटस लेना पड़ता है डोरमेंट कंपनी का, तो इसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कंपनीज के जो डायरेक्टर्स ये थॉट टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी और एन इनएक्टिव कंपनी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो इन्फॉर्मेशन हमने आपको बताई है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग द एलिजिबिलिटी ऑफ फी फार्मा लिमिटेड टू अप्लाई टू आरओसी टू ऑब्टेन द डोरमेंट स्टेटस ऑफ द कंपनी। पहला तो एलिजिबिलिटी, क्या वो अप्लाई कर सकता है, पहली बात तो ये पूछी गई है। दूसरी बात ये पूछी गई है कि अगर बी फार्मा लिमिटेड इज कंटिन्यूइंग द पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी एंड ऑल द पेमेंट ऑफ रेंटल्स और ऑफिस एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर फॉर इट्स मेंटेनेंस, तो भी क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या तब भी वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको ये नहीं बताना है कि मतलब कि कंपनी में कैसे कर सकता है, रजिस्ट्रार कंपनी कैसे अप्लाई करके, ये सब नहीं पूछा उन्होंने। सिंपली की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कि आप कब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ये पूछा हुआ है। तो इफ यू सी द क्वेश्चन का आंसर, तो आप देखेंगे जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन 455, क्योंकि डोरमेंट कंपनी इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। कब किसी कंपनी को हम डोरमेंट कंपनी या इनएक्टिव कंपनी कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 455, जो ये कहता है एनी इनएक्टिव कंपनी में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी क्या होती है, वो भी आपको पता है कि कभी उसने नाइदर ही हैज बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और नाइदर हैज मेड एनी इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। उसने लास्ट 2 फाइनेंशियल में कोई मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, ना ही कोई बिजनेस कर रहा है, ना ही कोई ऑपरेशन में है, और ना ही उसने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन से फाइलिंग करी है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसी चीज में आपने देखा बी फार्मा, हमने क्वेश्चन में देखा कि बी फार्मा लिमिटेड ने लास्ट 2 साल से ही हैज बीन नाइदर कैरिंग ऑन द बिजनेस और ऑपरेशन एंड नाइदर हैज फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर एनुअल रिटर्न्स and neither it has made any significant accounting transaction during the last 2 financial year, and thus it falls within the definition of inactive company की definition में वो आता है, and therefore he is eligible to apply to the registrar of company to obtain the status of the dormant company। आप लोग मतलब समझ गए कि पहले तो वो inactive company कैसे है, inactive company है तो he can apply for the dormant company के status को के लिए अप्लाई कर सकता है। देन हमारा सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन था कि अगर वो पेमेंट ऑफ फीस दे रहा है या फिर वो मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस के लिए, ऑफिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए अगर किसी तरह का पेमेंट कर रहा है, तो क्या तब भी वो एलिजिबल है। तो सेक्शन 455 में अगर आप देखेंगे उन्होंने बताया कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या है, क्योंकि वो हमने कहा कि ना ही उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन किया हुआ हो ड्यूरिंग द 2 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या है। तो इट सेज दैट एनी ट्रांजैक्शन, मतलब वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन अदर देन मींस एक्सेप्ट, यानी कि जो नीचे दिए हुए हैं उनको छोड़कर कोई भी ट्रांजैक्शन आपका अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है। और वो उसके अलग तो कौन सी वो एक्टिविटीज है जो इस पवी में नहीं आती है, दे आर द पेमेंट ऑफ फीस।
ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा टू द रजिस्ट्रार, जो रेगुलर फीस देनी पड़ती है फॉर एनी ऑफ द कंप्लायंसेस पार्ट दैट हैज बीन रेगुलरली बीइंग पेड बाय द कंपनी, और एनी पेमेंट दे हैव मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर इस एक्ट में कुछ स्पेसिफाइड है, अगर उन्होंने उसको भी फुलफिल करते हुए अगर कोई पेमेंट किया है, तो that also does not fall under the purview of this definition. Then allotment of shares to fulfill the requirement of this act, so this is also being one of the exception clause. Then the payment for maintenance of its office and records, अगर इसके लिए भी कंपनी कर रही है तो वो भी आपका इसमें नहीं आता है, दिस डज नॉट कम, एक्सक्लूडेड है ये सब एक्टिविटीज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी ने स्टेटस डोरमेंट कंपनी का ऑक्यूपाई किया नहीं किया, अगर वो ये चीज कर रहा है तब भी वो एलिजिबल है, क्योंकि ये चीज उसे करनी ही है रेगुलरली, चाहे उसका बिजनेस चले ना चले, चाहे वो ऑपरेशन में हो ना हो, चाहे कोई सिग्निफिकेंट आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। इसलिए अकॉर्डिंगली द बी फार्मा जो लिमिटेड है वो स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज to apply the status of dormant company even if it has continued, चाहे उसने भले ही पेमेंट ऑफ फीस वो करता आया हो, or he has made the payment of rental for his office and accounting records for last 2 years, as because क्योंकि ये दोनों ही transactions जो उसमें स्पेसिफाइड है क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडेड है, ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ही इज एलिजिबल। दिस इज वॉज अबाउट द डोरमेंट कंपनी जो हमने मिसलेनियस चैप्टर से लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स टेक द सिक्योरिटी लॉज। आपको पता है जो 70 नंबर का हमारा कॉर्पोरेट लॉ क्वेश्चन है, इट कवर्स Companies Act as well as securities laws. So securities laws में we have covered the SEBI Act 1992 as well as the SEBI LODR regulation 2015, और रेगुलेशन जो हमारा है बहुत ही ओवरव्यू टाइप से हमने आपको पहले भी कहा है, और प्लीज अमेंडमेंट जरूर देखिएगा, SEBI LODR में काफी अमेंडमेंट्स हैं। इसमें आपने देखा होगा हमारी जो रेगुलेशन मई में आई थी अमेंडमेंट वो है, प्लस सितंबर में आई थी, प्लस हमारी एक अमेंडमेंट थी, थर्ड अमेंडमेंट SEBI LODR की जो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल की गई है। ये तीनों ही अमेंडमेंट्स हमारे SEBI LODR की रेगुलेशंस को अमेंड कर रहे हैं, तो प्लीज गो विद द अमेंडमेंट दैट व्हाट वी हैव सेड यस्टरडे आल्सो, that every detailed amendments available on the website in the RTP. Please go and read these amendments to keep yourself updated on these topics. So SEBI, if we go to the SEBI, it's a part of section B, securities law. SEBI, the preamble of SEBI describes the basic function of SEBI is that it's the power of SEBI is to protect the interest of the shareholders and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith. This is it's divided into two parts: SEBI Act 1992 and SEBI LODR Regulations 2015. So kindly go through this chapter. In this chapter of SEBI, various powers have been provided to SEBI, and what are the powers relating to SEBI regarding stock brokers, intermediaries, and what are the penalties levied on the stock brokers, on the members of the company. So these are all the given in the chapters, the SEBI Act, and after reading this chapter you will be able to explain the role, powers and functions of SEBI, then how the SEBI regulates the capital markets in India under a resolution of the Government of India. It is also provided under this chapter, so kindly go through this also. Then there are some prohibition on the manipulative and deceptive devices, insider trading, and substantial acquisition of securities or control. So this provision is very important. So kindly go through this also. And what are the penalties and adjudication, and identify the establishment, jurisdiction, authority, procedure of appellate tribunal. Many questions are being framed on the penalties part also. Many times a question is framed on the composition of SEBI, that who will be the chairman. So these type of direct questions, mainly major part is mainly direct theoretical questions came from the SEBI part, and second part is your SEBI LODR. So as Nisha has already conveyed to you that in this part the whole SEBI LODR regulation is not covered. We have covered the only overview. So it's very interesting regulation, but at the same time the amendments are very crucial, because last 2-3 times the questions of SEBI LODR is prepared, is being made, and that is true that only on the amendment. So kindly go through the amendment. It's uploaded on the website also. It's available along with the RTP also. So one question we will discuss of this chapter. The board of SEBI is managed by its members.
The chairman, Mr. A, aged 65 years, has just completed his 3-year term of office and his office has become vacant. The union government is of the opinion that Mr. A is a person with specialized knowledge in the area of law, finance, economics, and appoint him as a chairman for another period of 3 years. So we have to calculate that, discuss the validity of the above appointment under Section 5 of SEBI Act 1992, that whether the Mr. A appointment of Mr. A as a chairman is valid or not. And secondly, the board of SEBI at its meeting passed a resolution altering the bylaws of one of the member of the stock exchange. The stock exchange refused to accept the alteration on the ground that the appointment of one of the directors in the board was defective. Explain whether the contention of the stock exchange is right or not. Moving to part 1, term of office. As per section 5 of the SEBI Act 1992 and the rules framed thereunder, the chairman may hold office for a period of 5 years, subject to maximum age limit of 65 years, and can be reappointed by the central government. So for the appointment of a chairman, the maximum age limit is 65 years. Beyond 65 years, he cannot be reappointed or he can be appointed. So in the instant case, the appointment of Mr. A as the chairman to the board of SEBI by union government is not valid because he is of the age of 65 years, so he cannot be reappointed in the board. So it's not valid as Mr. A is of 65 years. Second part. Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the board. Section 8 of the SEBI Act 1992. In this part, it's not necessary to write the section number, so you can avoid also. But if you are remembering, then you can quote. The following reasons shall not invalidate any act or proceedings of the board. Any defect in the constitution of the board, in the appointment of any person or member of the board, any irregularity in the procedure of the board not affecting the merits of the case. So, as per the above provision, the passing of the resolution altering the bylaws of the stock exchange of SEBI is valid, even though appointment of one of the directors of the board is invalid. Accordingly, in the instant case, the contention of the stock exchange regarding refusal to accept the alteration on the ground that the appointment of one of the director in the board was defective is not right. So you can see that this is a direct theoretical question. Some calculation, age is given, age limit is given. So you can see that there is a age limit of members also, age limit given in the chairman also. So these type of questions are very interesting in SEBI. So just kindly go through this type of questions. These are plenty of questions of SEBI on in the suggested answer in the RTP, but maybe RTP of the previous examination suggested answers also covers the questions on Securities Contract Regulation Act. So this act, Securities Contract Regulation Act, and rules thereunder is not applicable for your examination from the last to last attempts. So kindly avoid that type of questions. Yes. Now moving to the next part is the economic law question. Yes. My dear friends, you must be seeing that economic law question is of 30 marks. यहाँ 30 नंबर का है आपका economic law questions, और इसमें हमने जो कवर किया है, we have covered certain significant economic laws. तो हमने जो selected economic laws इसमें cover किया हुआ है, that you must be aware of, that is the PMLA, FEMA, FCRA, Arbitration, IBC. Earlier there was a Surface Act also, but yes, from November 19 and onwards, we have removed or excluded from the scope of coverage this Surface Act also. So मतलब SCRA plus Surface Act. Yes. ये दोनों ही आपके excluded, and apart from that, in certain portion from the companies that if you see producer company fully excluded, आपको उसका कुछ भी नहीं पढ़ना है. साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वाइंडिंग अप के कुछ सेक्शंस है जिसको एक्सक्लूड किया हुआ है, तो आप अपनी स्टडी मटेरियल को बेस बनाइएगा while reading this winding up chapter or of NCLT chapter, because in these chapters particularly specifically we have removed certain sections. उन सेक्शंस आपको आपके लिए एप्लीकेबल नहीं किया गया है, तो वो कौन से सेक्शंस है इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल देखना पड़ेगा, या फिर हमारे अर्लियर नोटिफिकेशंस को भी आप देख सकते हैं. हमारे जो स्टडी मटेरियल है इट इज इन लाइन विद दिस अमेंडमेंट ओनली, किस हिसाब से बना हुआ है, कि क्या एक्सक्लूडेड है उसी हिसाब से हमारा बना हुआ है. इट इज नॉट कवरिंग दीज एक्सक्लूडेड सेक्शंस इन द ईयर. मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल है इट इज इन लाइन विद आपका जो भी एक्सक्लूजन वगैरह सब निकाल के आपका जैसा जो चीजें एप्लीकेबल है उसी हिसाब से बनी हुई है.
प्लस हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक लॉज की, तो इकोनॉमिक लॉज में अगर आप देखेंगे 30 नंबर का होता है। अगर आपको हमने कल स्किल वाइज एंड सेक्शन वाइज वेटेज जब दिखाया तो हमने बताया था आपको उसमें से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं केसी एज वेल एज एए टाइप्स। उसमें आपके कोई भी ईएनएस टाइप क्वेश्चन नहीं बनता है, इवन नाइदर कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आपका इकोनॉमिक लॉ का कोई क्वेश्चन होता है। तो यानी ये है कि कंपल्सरी वाला क्वेश्चन सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ पोर्शन को कवर करता है, दैट टू कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके 2 से लेके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपके 6 तक, उन सब में एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक लॉस का होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ पोर्शन, अदर पोर्शन विल बी ऑफ द इकोनॉमिक लॉ पोर्शन। तो इकोनॉमिक लॉ का जो क्वेश्चन आपका आता है 6 नंबर का आता है। इट मे बी इन पार्ट्स और सब पार्ट, दैट इज डिफरेंट, बट यस आपका कंप्लीट अगर कंबाइंड करें तो 6 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन इकोनॉमिक लॉ क्वेश्चन में से बनता है। तो इकोनॉमिक लॉस में हमने आपको बताया जैसे पीएमएलए, पीएमएलए की अगर हम बात करेंगे तो पीएमएलए आप सभी जानते हैं बहुत ही कॉमन एक्ट है और आजकल आए दिन न्यूज में छाया रहता है, जिसकी चाहे नीरव मोदी की बात करो, चाहे वो विजय माल्या जी की बात करो, आप किसी की भी बात करो, इवन आजकल तो ईडी के चक्कर में आपने प्रियंका गांधी का भी नाम आ रहा है, प्लस मैरी जैक्वेलिन फर्नांडिस, इतने बड़े नामी ग्रामी लोगों के नाम आ रहे हैं। तो समवेयर यू मस्ट बी वेरी कीन कि भैया ये पीएमएलए मतलब क्या चीज है, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो इस लेवल का हो या इस लेवल का। तो है तो इंटरेस्टिंग एक्ट। तो बट यस, अब जब हम पीएमएलए की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी जो हमारा पीएमएलए एक्ट है, पीएमएलए एक्ट की अगर बात करो तो पीएमएलए एक्ट में क्या होता है, जनरली जो मनी होता है, जो पैसा होता है, इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड इनटू अनटेंटेड मनी। अनटेंटेड मतलब मीन्स वाइट फॉर्म। जनरली इसमें क्या होता है, अगर हम कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करें, मनी लॉन्ड्रिंग इज अंडरस्टैंड एज टू कन्वर्टिंग ऑफ ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी, या आप ये कह सकते हैं नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में बदलना। अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, ये आपका पीएमएलए होता है। कॉमन टर्मिनोलॉजी में मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मतलब ये चीज बहुत सुना है मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो आप ये समझिए काले पैसे को सफेद में मतलब व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। ठीक है, और ये जो पैसेज होते हैं जनरली क्या होता है कि ऐसे बहुत से बिजनेस हैं या बहुत से ऐसे क्राइम्स हैं, एक्ट्स हैं, जिनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ आपका जो मनी होता है जनरेट होता है। अब जब पैसा जनरेट होता है तो उसको यूज कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक साथ बहुत ह्यूज अमाउंट, अगर आपने क्वांटिटी ऑफ अमाउंट यूज किया, क्वांटम ऑफ अमाउंट, तो आप विदाउट थ्रू द बैंकिंग चैनल्स आप नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में किए जाते हैं। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, हम क्यों इतने डिफरेंट फेजेस में, क्यों इतने ट्रांजेक्शन्स ऑफ सीरीज में करते हैं, जस्ट कि किसी को ये ना पता चले फ्रॉम वेयर दिस मनी हैज कम फ्रॉम, और ये मनी किस फॉर्म में आया है। हम उस ब्लैक मनी को, टेंटेड मनी को अनटेंटेड में बदलते हैं, यानी इसको हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। तो कब उसे आप ये समझ लीजिए हम अपने जो लेजिटिमेट मनी होता है उसमें मिक्स कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। दिस इज द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस एक्चुअली इज। और आप देखोगे जनरली इसको हम 3 लेयर में बांट सकते हैं। पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेप ही होता है वो 3 लेयर में बढ़ सकता है। बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो मनी होता है इट इज एंटर्ड और प्लेस्ड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि आपको उसमें बैंक वगैरह में डालना है, फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर करना है, सोसाइटी में एंटर करना है, इसको चलाना है कि पता ही ना चले भैया ये पैसा कहाँ से आया, किसका है, कैसे आया। दूसरा होता है लेयरिंग। इसमें क्या होता है, आपको सेपरेट कर देते हैं मनी को फ्रॉम इट्स रिसोर्स। और जब एक बार वो अगर आपके उसमें फाइनेंशियल सिस्टम में एंटर कर दे तो आपको यही नहीं पता तो सोर्स कहाँ है। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग में होता है कि उसको लेजिटिमेट मनी के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो दिस इज द 3 स्टेप्स हाउ द मनी लॉन्ड्रिंग इज बीइंग डन। और सो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, इसी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हमारा पीएमएलए एक्ट है। और पीएमएलए एक्ट अगर आप देखें तो ये बेसिकली हमारा एक्ट हमारा है 2002 का एक्ट है। यस, और इस 2002 के एक्ट में आप अगर स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको उसमें डेफिनेशंस वगैरह बता रखी है। आपको ये बता रखा है हु ऑल आर द अथॉरिटीज हु कैन लुक इनटू दिस पार्ट, कि आपको उसमें कौन कौन उस अथॉरिटीज है जो उसके ऊपर आप कह सकते हो एडमिनिस्टर करती है, इस पूरे एक्ट को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो बेसिकली देखा जाए तो मनी लॉन्ड्री जो होता है डील्स विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जो भी आपको उस क्राइम से, जो भी आपने एक्ट किया, जो ऑफेंस किया, उससे जो भी चीजें आपको ऑब्टेन हुई है उसको गवर्न करने के लिए ही बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रेगुलेट किया गया है। ठीक है, अब तो लेट्स ट्राई टू टेक द कंसेप्ट ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू द वे ऑफ दिस, थ्रू एन एग्जाम्पल, कि कैसे कैसे क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिया है एक आपके लिए। जी हाँ, इसमें क्वेश्चन से बोला गया है एक डिक्लेयर्ड सस्पेक्ट है मिस्टर एसपी was facing charges under the PMLA. Okay,
So Mr. SP died in the midst of the proceeding. उसके ऊपर चार्जेस थे, यानी कि उसको वो प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा था ऑफ दिस पीएमएलए केस, और बीच में ही उसकी क्या होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस. Now the requirement of the question is what shall happen to the confiscated property under the act, and whether a claimant with a legitimate interest in the property who has suffered a loss is entitled for the claim. मतलब कि जो क्लेमेंट है, जो भी लीगली ऑथराइज है, क्या वो उस कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर. तो ये क्वेश्चन जो हमारा है, इट डील्स विद सेक्शन 8 ऑफ द पीएमएलए, जहां पे ये बोला गया है कि अगर कोई ट्रायल है, वेयर द ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड. भाई अब जब व्यक्ति मरी गया है, इज नो मोर, तो हाउ द ट्रायल कैन बी कंडक्टेड अगेंस्ट दैट पर्सन. So there is a situation कि cannot be conducted. In that case, what will happen? The special court. अब स्पेशल कोर्ट क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी को बिलोंग करता है, तो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे अपॉइंट होता है टू लुक इनटू दिस पार्ट. जो स्पेशल कोर्ट है, व्हाट ही विल डू, स्पेशल कोर्ट शेल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स रिगार्डिंग द कॉन्फिस्केशन, या तो कॉन्फिस्केट कर लेगा या फिर ऑन द रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी. ठीक है, लेकिन कब करेगा? जब कोई एप्लीकेशन मूव करेगा, सीधी सी बात है. और एप्लीकेशन कौन मूव करेगा? हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी. मतलब कोई भी उठ के तो नहीं आ जाएगा कि एप्लीकेशन फाइल कर दे. डेफिनेटली हु मस्ट बी हैविंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, ही विल बी फाइलिंग और मूविंग एन एप्लीकेशन एंड टू द स्पेशल कोर्ट. और फिर उसके बाद जो स्पेशल कोर्ट है वो देखेगी कि उसे क्या ऑर्डर पास करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. And suppose now the first condition is that if the property stand confiscated, we don't know what the order the special court has given. Suppose ने confiscate कर दिया है property, stand confiscated, और ये confiscated किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. There the special court may also direct the central government to restore, वो restore करने के लिए कहेगा such confiscated property of a claimant with the legitimate interest in the property. जो इसका जितना इंटरेस्ट है उतनी प्रॉपर्टी को रिस्टोर करने को बोलेगा. Who have suffered a quantifiable loss as a result of offense of money laundering. Quantifiable यानी कि जिस लॉस को आप एस्टिमेट कर सकते हो, एसेस कर सकते हो, जितना उसको लॉस हुआ है उस हिसाब से उसके लेजिटिमेट इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा. और सेफ गार्ड वो स्पेशल कोर्ट जो है, ही में डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्टोर सच कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी. ठीक है. दूसरी कंडीशन ये हो जाती है कि अगर स्पेशल कोर्ट शैल नॉट कंसिडर सच क्लेम, मान लो उस क्लेम को कंसिडर नहीं किया, उसे लगता है लेजिटिमेट क्लेम जो कर रहा है प्रॉपर्टी में उसको रिस्टोर ना किया जाए जब तक कि वो इसको ये ना लगे कि भाई जो क्लेमेंट है एक्टेड इन द गुड फेथ एंड हैज सफर्ड द लॉस. तो उस कंडीशन में तब तक वो क्या करेगा, उसके क्लेम को कंसिडर नहीं करेगा. अगर वो गुड फेथ में किया है तो डेफिनेटली ही विल टेक एंड कंसिडर, एंड वेयर एवर ही हैज सफर्ड अ लॉस, तो उसको भी ध्यान में रख के वो ये डिसीजन ले सकता है ऑफ रिस्टोरेशन और टू जस्ट एंटाइटल हिम टू claim for his legitimate interest. Further provided that Supreme Court जो है, if it thinks consider the claim of the claimant for the purpose of restoration of such property during the trial of the case in such manner, fit अगर लगता है तो ही कंसिडर करेगा, उस पर कोई सा बाउंडेशन नहीं है. सो अकॉर्डिंगली इन द लाइट ऑफ द सेट प्रोविजन हम ये चीज कह सकते हैं, जो क्लेमेंट है अगर उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट है इन द प्रॉपर्टी का, उसने सफर्ड किया है लॉस, दैट इन दैट केस ही इज एंटाइटल्ड फॉर द क्लेम. तो ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आएगा, तो पहला तो उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए और दूसरा ही है सफर्ड अ लॉस. अगर ये दोनों चीजें उस प्रॉपर्टी में हुई है ऑफ द एक्यूज विच इज रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी विच हैज बीन कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग द ऑफेंस ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, तो उस केस में ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज इंटरेस्ट. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था, वेदर मिस्टर डी was given an offer by the company vendor Mr. TR that if he discloses him the confidential data of the company in which he is working as an employee, so Mr. TR will pay him a huge sum of money in exchange of the exchange of information. So Mr. D accessed the computer of his executive director and passed on the confidential information to the company to Mr. DR in return of a huge sum of money. ठीक है, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा कंपनी का कि मैं इसके बदले में आपको इतना पैसे दूंगा. नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज वेदर मिस्टर डी विल बी हेल्ड लायबल अंडर द पीएमएलए एक्ट 2002. क्या वो लायबल होगा? तो जी हाँ, अगर हम इस क्वेश्चन का भी आंसर देखेंगे तो ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस का ऑफेंस है. अगर आपने शेड्यूल्ड ऑफेंस देखा होगा तो पीएमएलए एक्ट में आपको शेड्यूल्ड ऑफेंस बताया गया है. उसमें ये बता रखा है कि
कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कैटेगरी में आते हैं, मीन्स कि वो एक्ट किए गए हैं पर्टिकुलर एक्ट में एंड दे आर द ऑफेंसेस, और वो उस ऑफेंस में भी सेपरेटली उनकी ट्रायल चलेगी बिकॉज ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दैट पर्टिकुलर एक्ट, प्लस अंडर पीएमएलए भी चलेगी। अगर उसके प्रोसीड से उन्होंने कुछ भी इनलीगल गेन किया है तो उसके लिए उसके ऊपर पीएमएलए के अंदर भी ट्रायल चलेगी। तो इन दिस केस व्हाट हैपन, सेक्शन 4 के अंदर जो कि हमारा मेन पनिशमेंट को डील करता है कंपनीज एक्ट के अंदर, उसमें ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति हु एवर कमिट्स the offense of money laundering shall be punishable with rigorous imprisonment for a term of not less than 3 years but maximum up to 7 years. That means from 3 years to 7 years का टाइम उन्होंने बता रखा है, प्लस ऑल्सो लाइबल टू फाइन, यानी कि दोनों चीज के लिए उसकी सजा का भी बता दिया, फाइन का भी बता दिया है। तो इस केस में क्या था, जो मिस्टर डी था, he was an employee of HN1 Limited, so he accessed the computer of his senior or a boss executive director and passed on the confidential information to the of the company to Mr. TR in return of a huge sum of money. So which is an offense under section 3 of the PMLA, and this is also an scheduled offense under paragraph 2 of the part A. शेड्यूल ऑफेंस के आप सारे ऑफेंसेस को किस किस एक्ट में आते हैं, कौन सा पैराग्राफ है, यू कैन नॉट रिटेन, बट यस यू शुड नो व्हाट ऑल कम्स अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल। शेड्यूल के 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट ए में किस टाइप के ऑफेंसेस आते हैं। एक्चुअली इट इज कवरिंग मेनी एक्ट्स, और उस एक्ट में अगर आपने कोई एक्ट कारित किया है एंड इट इज बीइंग एन ऑफेंस, तो वो आपको इसके पार्ट ए में आपको पीएमएलए के उसमें मिल जाएंगे, और उसके प्रोसीड्स अगर आपने कुछ किया है तो आपका पीएमएलए लग जाएगा, और पीएमएलए लगते ही यू विल गो इनटू द सेक्शन 3 एज वेल एज सेक्शन 4। दिस इज सिंपल। तो यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं मिस्टर डी इज पनिशेबल विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एज वी हैव मेंशन्ड अबव एज वेल एज विद द फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यस, हमने पीएमएलए में देख लिया कि हमारा पैसा जब बाहर जाता है तो हम पीएमएलए के प्रोविजंस लगाते हैं, बट क्या उन पैसे को, क्या उन मनी का क्या करें जो हमारा बाहर से इंडिया के अंदर अगर कुछ मनी आता है तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एफसीआरए जो हमारा एक्ट बना था 2010, ये इसी चीज को केटर करता है कि टू प्रोटेक्ट द फ्लो ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द फॉरेन सिक्योरिटी ऑफ अवर इंडिया। ओके, सो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको देर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज फॉरेन सोर्स, हाउ टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, देर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस विच आर गिवन इन द एक्ट। सो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें how the law regulates the acceptance and utilization of foreign contribution, identify the restriction on acceptance, what are the restrictions for utilization of foreign contribution, understand the procedure for the registration of persons to be regulated in this act, and how the persons regulated by the act are required to manage the financial aspects of foreign contribution. Then there is a adjudicating authority, like as a PMLA there is adjudicating authority there also, the provisions relating to appeal and revisions, and the offences and penalties on contravention of the compliances. So this foreign contribution, there is a 6 marks question, so you have to apply it thoroughly, and आपको उसका concept अच्छी तरह पता होना चाहिए because it's very scoring. If we go to the question, Mr. Rajesh seeks your expert advice for reporting compliances in respect of receiving the following foreign contribution or gift article in India, referring to the provisions of the Foreign Contribution Regulation Act 10. So requirement of the question is foreign contribution from his brother who stays in Singapore to the extent of 12,20,000 rupees in a financial year. And second requirement, a TV set of 1300 USB gifted to him by his friend who stays in Japan for his personal use. The market value of the said gifted article in India on the date of gift is 1 lakh rupees. If we see that as per section 4E of the Foreign Contribution Regulation Act, and the rules are also applicable for its examination, and we have given the rules in the study material also. So which rules are covered in the study material, you have to refer only those rules. Even the persons prohibited under section 3, that is persons not permitted to accept foreign contribution, are allowed to accept foreign contribution from their relatives. However, in terms of rule 6 of FCRR, any person receiving foreign contribution in excess of 1 lakh rupees
or equivalent thereto in a financial year from any of his relative shall inform the central government regarding the details of the foreign contribution received by him in electronic form in C1 within 30 days from the date of receipt of such contribution. So maximum he can accept up to 1 lakh rupees. So since the amount of contribution is 12 lakh 20,000, Mr. Rajesh has to inform the central government because it's exceeding 1 lakh. So he has to inform the central government regarding the details of the foreign contribution received by him from his brother who stays in Singapore in electronic form. Form is also prescribed. If you are not remember, you can tell the in the prescribed form. The form number is not compulsory to write. Within 30 days from the date of receipt of such a contribution. So you can see that according here the section 3 is applicable, section 4 is applicable, and it is given that up to 1 lakh rupees there is no need to inform the central government, but if the foreign contribution is in excess of 1 lakh rupees, so the concerned person has to inform the central government in the prescribed form within receiving 30 days from the date of receipt of such contribution. Moving to part second, as per 6A, he has given a TV from a friend from Japan, gifted to him a TV for his personal use. The market value of the said gifted article in India on the date is 1 lakh. So, foreign contribution is defined into 1H, means the donation, delivery or transfer made by any foreign source of any article not being an article. Any article given to a person as a gift for his personal use if the market value in India of such article is not more than as some prescribed from time to time by the central government by the rules made in this. The central government has specified rupees 1 lakh. Currently the limit is 1 lakh rupees. So in the given situation, Mr. Rajesh received a TV set. Amount market value of the TV set was 1 lakh as a gift from his friend who stays in Japan for his personal use. So the TV set received by Mr. Rajesh shall not be deemed to be the foreign contribution and no reporting compliances shall be attracted. As in the first part, the reporting compliances were attracted because the amount was exceeding 1 lakh. But here the market value is 1 lakh only. So the reporting compliances are not required in this case. So these type of questions will come like what they will ask the question paper. The paper setter may ask that some amount is given, whether it is a foreign source or not, whether it is a foreign contribution or not, whether we can accept. So these type of questions will be coming from this chapter. Now moving to next topic. That is IBC. IBC. Yes, dear friends, IBC is again one of the important topics in your paper, and we must be seeing many times around 6 to 8 number questions is easily being asked from this particular topic. Then IBC is also important because many students who have opted for the elective paper, there also it's form an important chapter over there. So IBC, looking at the increasing trend in the corporate world, IBC is the most hot, you can say it is the most prevalent act as of now, because you must be listening, many companies are going into bankruptcy and insolvency. आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो भी insolvent declare कर रहे हैं अपने आप को. Even many of the important companies, they have been declared to be bankrupted. तो अभी आज के टाइम में this act is हर एक को एकदम से क्लिक कर जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का. लिसनिंग मेनी इंसिडेंट्स इन टुडेज टाइम दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस, मेनी बैंक्स आर बिकमिंग, दे आर नॉट एबल टू पे द डेट्स, मेनी थिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट. तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है. कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो ऑन मतलब डे टू डे बेसिस पे आप सुन रहे हैं कि दे आर बीइंग डिक्लेयर्ड एज ए इंसॉल्वेंट एंड बैंक्रप्टेड. So just considering the relevance from this aspect about the Bankruptcy, Insolvency and Bankruptcy Act, अगर आप देखेंगे जो Insolvency and Bankruptcy Act is being regulated by the IBBI. This is the body, this is the board, this is the Insolvency and Bankruptcy Board of India. ये main regulating body है जो Insolvency and Bankruptcy Code को regulate करती है. तो you will see that this board will oversee the work of the insolvency and bankruptcy of the corporate persons, firms and individuals. Please make it a note, किन 3 चीजों का कर रही है? Corporates का, individuals का and firms का. तीन चीजों को रेगुलेट करती हैं. इन 3 चीजों की वर्किंग को रेगुलेट करती है, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर्स को रेगुलेट करती है. जो एक्चुअल वर्किंग होती है टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी,
will be handled mostly by the insolvency professionals के द्वारा की जाती है. The basic idea of insolvency code is that when an enterprise, whether it may be individual, firm, or a corporate person, defaults in the payment of the dues, the control shifts to the COC. COC means Committee of Creditors of the Financial Creditors. ओके, तो आपने देखा कि वो क्रेडिटर्स के पास चली जाती है, तो एक तरह से हम ये कहते हैं क्रेडिटर्स ड्रिवन हो जाती है यहाँ पे. तो उनके पास मेन जो क्रेडिटर्स ड्रिवन से सीओसी के पास चले गए, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के ही लोग होते हैं जो मिलके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सीओसी को. उसके बाद अगर आप ये देखेंगे जो यहाँ पे डिसीजन जो होता है रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन टाइम बाउंड मैनर, so that there are greater chances that enterprises is saved as a going concern rather than being declared as in liquidation. So जो भी available sources हैं, it may be have the best use of it. So जो जहाँ पे जो मेन इंटेंट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का कि पहले वो चाहते हैं वो कंपनी रिवाइव करे, एंड इफ इट इज नॉट पॉसिबल दैट टू take it forward, then they will declare go for the liquidation process of that particular corporate or the individual or the firm. जो हमारे अगर हम देखें सिलेबस में जो हमने कवर किया हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, हमने कवर किया हुआ है फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 59 यानी कि वॉलंटरी, हमने वॉलंटरी वाइंडिंग अप तक हमने अपना ये चीज कवर अप किया हुआ है. और आप अगर ये देखेंगे जो इंसॉल्वेंसी एंड कॉर्पोरेट का ये है कि मेन जो इसका पोर्शन जो है इट इज रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट पर्सन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को हमने अपने इसमें कवर किया, प्लस रेलिवेंट डेफिनेशंस कवर की हुई है. तो आपको अगर इंसॉल्वेंसी आपको अच्छे से समझना है, then you need to know the relevant definition also in a very well manner, because the terminologies that has been used in this code, if it's not clear to you who all stands for and what are the debts, what type of the debts and who all are the financial institutions, तभी आप उस चीज को अच्छे से समझा पाएंगे, रेगुलेशंस को कैसे यहाँ पे रेगुलेट करते हैं. और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है बेसिकली इट्स अ प्रोसीजरल लॉ, तो उसके प्रोसेस को समझना, उसकी टाइमलाइंस को समझना, ईच एंड एवरी स्टेप हैज अ टाइमलाइन. एक्चुअली आपको कितने दिन में एप्लीकेशन फाइल करनी है, उसके बाद कितने दिन में आपका जवाब आना चाहिए, कितने दिन में एडमिट हो जानी चाहिए, उसके कितने दिन में अगर आपको कोई एडमिट करने के बाद अगर आपको लगता है यू फील लाइक समथिंग हैज बीन लेफ्ट आउट, तो अगर आप उसको रिजेक्ट के बाद अगर उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं देन टू रीसबमिट, तो उसके लिए एवरीथिंग हैज बीन गिवन विद इन द टाइमलाइन टू बी परफॉर्म्ड, एंड दैट यू नीड टू नो, नॉट ऑफ एवरी बट यस कि एप्लीकेशन कब एडमिट होते हैं, कितने टाइम में पूरा सीआईपी प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए. To certain extent, these are the important timelines that are also being needed for you students to remember, because questions इन पे पूछे जाते हैं कि सीआईपी का पूरा प्रोसेस कब खत्म होता है, तो उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है कितने दिन में आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, कितने दिन में एक्सेप्ट हुई, एक्सेप्ट होने के बाद कितने दिन में उसे एनसीएलटी ने एडमिट किया, और कितने दिन में अगर उसे रिजेक्ट करने के बाद कितने दिन में वापस उसे भेजा कि आप उसमें करेक्शन या कोई मॉडिफिकेशन कर पाए. तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइमलाइन समटाइम्स यू आर बीइंग टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन. तो आपको इसलिए ये टाइम और टाइम पीरियड आपको अच्छे से पता होना चाहिए. अगर आप स्टेप्स की बात करें एनसीएलटी की, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है. पहले जो भी सीआईपी प्रोसेस होता है इट विल बी इनिशिएटेड, एंड दिस विल बी इनिशिएटेड बाय 3 लोग होते हैं आपके, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, या कॉर्पोरेट पर्सन इटसेल्फ. ये 3 लोग होते हैं दोज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन. और ये कब एलिजिबल नहीं होते ये भी आप देखेंगे, आपको इसके अंदर मिल जाएगा. उसमें ये भी बता रहा है कि व्हेन दे आर बीइंग डिस्क्वालिफाइड, तो आपको सेक्शन 11 ऑफ द कोड के अंदर मिल जाएगी कि व्हेन दे आर डिस्क्वालिफाइड टू फाइल एन एप्लीकेशन. तो आपको ये बताना चाहिए, और आपको ये बताना चाहिए कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होते हैं दे विल फॉर्म द सीओसी, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है हु विल फॉर्म द सीओसी. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कॉर्पोरेट पर्संस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे आरपी जो होते हैं, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स जो होते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द सीओसी ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ठीक है, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि जो भी प्रपोज रिजोल्यूशन प्लान है उसको रिवाइव कर पाए, और अगर वो रिवाइव नहीं होती देन दे गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन. फिर उसके बाद आपका ये होता है जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होता है वो सबमिट करता है रिजोल्यूशन प्लान को बिफोर द आरपी, एंड एन आरपी जस्ट प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल बिफोर द सीओसी. क्योंकि ये सब इसलिए लिंक्ड है और आपको इन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो एमसीक्यूज होते हैं बेसिकली वो इन्हीं चीज को टेस्ट कर लेते हैं कि स्टेप्स क्या है, अगला किसके पास जाएगा, कौन अप्रूव करेगा, एंड देन हु विल मेक प्रेजेंटेड टू द नेक्स्ट लेवल. तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. जस्ट प्रिपेयर अ चार्ट कि पहले किसके पास जाएगा एप्लीकेशन, कौन रिजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करेगा, कौन उसको आगे मतलब उसको देगा, किसको देगा, और वो फर्दर किसके सामने, सीओसी के सामने कौन रखेगा. तो दिस यूनिट एंड वन सीओसी हैज अप्रूव्ड देन इट विल गो टू द एनसीएलटी फॉर फाइनली बीइंग पास्ड. तो इसलिए आपको ये सब चीज स्टेप्स मालूम होना चाहिए. पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया टेक प्लेस इन द 180 days.
और आप चाहें तो फर्दर इसको एक्सटेंड करा सकते हैं इस पीरियड को विद द 90 डेज। तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का भी कंसेप्ट है, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट स्मॉल कॉर्पोरेट पर्सन के बारे में बात करता है। तो ये अलग से प्रोसीजर है फ्रॉम 55 से लेके आपका 58 तक। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बताइए, किन के ऊपर एप्लीकेबल होती है, उसका क्या प्रोसेस है, कितने टाइम पीरियड में वो कंप्लीट होगी, कब एप्लीकेशन फाइल होगी। तो दिस इज द सेपरेट प्रोविजन दैट डील्स विद स्मॉल कॉर्पोरेट पर्संस, सो यू शुड आल्सो नो अबाउट दिस थिंग्स। फिर आपका इसमें ये भी आ जाता है कि एनसीएलटी और एनसीएलटी बताए, दे आर द मतलब अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी ओवर हियर। ये आपको पता ही है, मेन एनसीएलटी है, देन एनसीएलटी अपीलेट अथॉरिटी है उस चीज का। और जो डीआरटी होती है, इट इज द एजुकेटिंग अथॉरिटी फॉर द नॉन कॉर्पोरेट पर्संस। कॉर्पोरेट पर्संस के लिए एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, प्लस नॉन कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल फर्म्स या एलएलपी एचयूएफ की बात करते हैं, तो दे आर द डीआरटी। ओके, यहाँ पे एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 में, दिस डील्स विद द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो कि एमएसएमईज के स्पेशली डील करता है। तो ये न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इन द इंसॉल्वेंसी कोड। और ये आपको क्विक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होता है, विच कैन बी प्रोवाइडेड टू एमएससीज, उनको लेकर रेगुलेट करता है, उनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को लेकर रेगुलेट करता है। देन नेक्स्ट इज द वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज। एज आई सेड, इफ द रिजोल्यूशन प्लान जो है, रिवाइवल प्लान जो है, अगर वो आपका सक्सेसफुल नहीं है, इट इज नॉट सक्सेसफुल, इन दैट केस द लिक्विडेशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनीज विल बी थ्रू द इंसॉल्वेंसी कोड ओनली। और जो डायरेक्ट वाइंडिंग का प्रोसेस है वो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ चुके हैं, और जो लिक्विडेशन रिलेटेड प्रोसेस है वो आपका अंडर दिस एक्ट यानी कि आईबीसी कोड के अंदर गवर्न होता है। तो दिस इज द सिंपल स्टोरी ऑफ द वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टेप्स। मैंने आपको इजिली वन लाइनर में समझा दिया, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी कोड। नाउ लेट्स टेक अप द क्वेश्चन। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन हियर। मिस्टर के, मिस्टर के इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ओवर हियर। कौन है? पहले तो आपको इसकी पोजीशन पता है कि वो किस पोजीशन में एक्ट कर रहा है। इज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ओवर। ही फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द एजुकेटिंग अथॉरिटी टू इनिशिएट द सीआईआरपी अगेंस्ट एम लिमिटेड एंड एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। यानी कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, यानी कि प्रोसेस सीआईआरपी का स्टार्ट हो चुका है। ऑन 10th जुलाई सीआईआरपी प्रोसेस जब एडमिट हो गई, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, तो दे हैव अपॉइंटेड मिस्टर अजय एज एन आईआरपी। आफ्टर द अपॉइंटमेंट उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया फॉर द इनिशिएशन ऑफ द सीआईपी प्रोसेस, और उन्होंने कॉल्ड फॉर द सबमिशन ऑफ क्लेम्स। डेट्स की अपनी रेलिवेंस होती है, तो प्लीज डोंट इग्नोर द डेट्स हियर। समटाइम्स द कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन दिस डेट्स ओनली, सो बेटर टू लुक आफ्टर द डेट मेंशन ओवर हियर। द सीओसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आईआरपी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हो गया, एंड देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड, मिस्टर के वांट्स टू नाउ विड्रॉ हिज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12A ऑफ द एबीसी। सारा सीआईपी प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सब हो गया, सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हो गई, एंड नाउ ही वांट्स टू विड्रॉ हिज एप्लीकेशन। सो आईआरपी जो थे, मिस्टर अजय जो थे, नाउ ही डिनाइड कि भैया आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सीओसी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। दिस आर द फैक्ट्स। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दैट इज मिस्टर अजय आईआरपी is right to deny Mr. K's right to file and withdrawal application with the NCLT। ये तब है जब सीओसी बन चुका है। दूसरी कंडीशन, इफ सीएसी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड। और तीसरा, भैया कौन अथॉरिटी है हु कैन पास द फाइनल ऑर्डर ऑफ विड्रॉल। ठीक है, ये 3 रिक्वायरमेंट्स है इसमें। तो आप देखेंगे सेक्शन 12A, क्योंकि ऊपर भी इन्होंने 12A का रेफरेंस आपको दे ही दिया है, तो आप जानते हैं 12A टॉक्स अबाउट द विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसको आप जब पढ़ेंगे तो यू विल सी दैट एजुकेटिंग अथॉरिटी अलाउ कर सकता है फॉर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन which has been admitted under section 7, 9 and 10. This deals with the financial creditor, this deals with the operational creditor, and this deals with the corporate person himself. ठीक है, इसके अंदर वो एप्लीकेशन कर सकते हैं बाय द एप्लीकेंट। अगर वो एप्लीकेंट का विड्रॉल कर सकता है इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय द एप्लीकेंट विद द अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ द सीओसी। अगर वो एप्लीकेशन जो उन्होंने मूव फॉरवर्ड करी है उसको अप्रूवल से पास किया विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ द सीओसी, तो जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो अलाउ कर सकता है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में ये बात स्पेसिफाइड थी, तो उस हिसाब से हमने बता दिया कि क्योंकि एप्लीकेशन को ऑलरेडी अप्रूवल मिलती 90% वोटिंग शेयर ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की फॉर विड्रॉल, एंड हेंस मिस्टर अजय कैन नॉट डिनाई, वो डिनाई नहीं कर सकता है के को कि भाई आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। ही कैन डू इवन आफ्टर द सीओसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब सेकंड कंडीशन थे, अगर सीओसी नहीं बनी है तो क्या होगा? जी हाँ, तब भी एप्लीकेंट कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर द विड्रॉल, बट ये जो एप्लीकेशन जाएगी शैल बी मूव थ्रू द आईआरपी।
एजुकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष पेश करेंगे वो एप्लीकेशन, बट इट विल बी मूव थ्रू द IRP. So here the resolution personnel shall submit such withdrawal application to the adjudicating authority on behalf of the applicant within 3 days of the receipt of request. ठीक है, जिस दिन से रिक्वेस्ट लोगों ने डाली है कि भाई हमें विड्रॉल करनी है कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर ने, उस दिन से 3 दिन के अंदर अंदर जो ये एप्लीकेशन है ये आपको मूव कर सकता है और इट विल बी प्लेस बिफोर द एजुकेटिंग अथॉरिटी. तो यस, जो फाइनल अप्रूवल है विड्रॉल का, इट शैल बी गिवन बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी. एंड जो COC है, भले इसमें कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, बट मिस्टर के शैल अप्लाई टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी, बट थ्रू द IRP और थ्रू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और वो विड्रॉ कर सकता है. हेंस द आंसर इस केस में भी सेम ही होगा कि वो डिनाई नहीं कर सकता है. एंड द थर्ड में हु इज द फाइनल अथॉरिटी? ऑफ कोर्स फाइनल अथॉरिटी इज ऑलवेज द एजुकेटिंग अथॉरिटी who will pass any sort of the application, whether it may be to admission or whether it may be the withdrawal of the application. So this part is done. तो मुझे लगता है हमने IBC भी कवर कर लिया. Looking at the time constraint, let's move to the FEMA part. Let's take some important concepts related to that thing also. Yes. FEMA की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे FEMA is also one of the important regulations, because FEMA में भी हमारा अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है. और अगर आप देखें FEMA जो है हमारा, बेसिकली इट टॉक्स अबाउट नथिंग, मतलब लॉ रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड लॉ है उसको रेगुलेट करता है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्सटर्नल ट्रेड एंड द पेमेंट्स एंड फॉर प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. ये उसका इंटेंट है. अगर हम देखें जो FEMA है बेसिकली इट डील्स इन द फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करता है. प्लस जो सेक्शन 3 है वो ये बताता है कि मेकिंग ऑफ एनी पेमेंट टू एनी पर्सन नॉट रेजिडेंट इंडिया और रिसीविंग ऑफ एनी पेमेंट फ्रॉम पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया. तो अगर वहां से आता है तो आप ये समझिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है. चाहे हम भारत से बाहर की तरफ भेजें या बाहर से भारत के अंदर आए, कोई भी अगर एक्सचेंज ऑफ मनी हो रही है तो इट विल ओनली एज पर द जनरल और स्पेशल परमिशन ऑफ द RBI से आएगा, तभी वो मतलब तभी वो आपका वैलिड माना जाएगा. इट शुड बी थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल के माध्यम से आपका फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए. ठीक है, तो ये बता रखा है. अब इसके अंदर देखा जाए जो आपके नेचर ऑफ क्वेश्चंस जनरली आते हैं, दे जनरली आर आस्किंग ऑफ एप्लीकेशन और ओरिएंटेड बेस होते हैं, आपके CK बेस भी होते हैं. और अगर आप देखो इसमें ज्यादातर इवन MCQs में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो यू नीड टू हैव द कंसेप्चुअल दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द FEMA पार्ट. एंड FEMA इज ऑफ कोर्स लिटिल बिट ट्रिकी, लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते. तो ओनली जस्ट रिक्वायर कि आप उसको अच्छे से पढ़ें और समझें. जब आप उसको समझ के करेंगे then only you will be able to understand the concept. And please go to the questions and answers whatever are the sources that are being available, so that more and more you learn, the more the conceptual clarity will be, and more will be the your brushing up of the, you can say, skill of learning, and that will definitely will take you the right direction. So let's take a question over here. Mr. A, he is a citizen of India and has been working in a company in Chicago, USA. Since from last 8 years he has been settled over there with his family. ठीक है, चिकागो की कंपनी में काम करता है, बाहर की कंपनी, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. फिर क्या होता है कि दैट सेट कंपनी ओपनड इट्स ब्रांच इन इंडिया एंड मिस्टर ए हैज बीन डेप्यूटेड देयर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 26 months from 25th April 2020. Now he remitted an amount of $280,000 on 20th December 2021 to his family who is residing in USA. और उसकी जो डिटेल्स ऑफ सैलरी विच ही हैज अर्नड फ्रॉम this period of 29th April 2020 to 30th November 2021 is given below. अगर आप देखें उसका ग्रॉस सैलरी जो कि USD में सब दिया हुआ है आपका, तो ये आपका दिया हुआ है आपका 3,50,000. देन आपका PF कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज टैक्स का TDS भी आपको बता रखा है. नाउ आपको पूछा है, रिक्वायरमेंट है कि कितना एक्सेस अमाउंट जिसने ट्रांसफर किया है, दिस इज द अमाउंट विच ही हैज ट्रांसफर्ड, कितना एक्सेस अमाउंट ही हैज रेमिटेड टू हिज फैमिली इन USA. ओके, अब सबसे पहले तो आपको इसके अंदर पता है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होता कौन है. तो वो आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी है FEMA के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन V की, अगर हम क्लॉज V की बात करें तो उस पर क्लियरली बता रखा है, इट मीन्स अ पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 180 days. वो भी कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. ये तो आपका नॉर्मल लॉ है जो आपको बता रहा है फॉर एनी पर्सन टू बी डिसाइडेड एज अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया. लेकिन साथ में डज नॉट इंक्लूड, यानी कि उसमें एक आपका एक्सेप्शन क्लॉज भी लगा दिया कि दैट पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया फॉर और
on taking up employment in India will not be included within this requirement of the number of days of stay in India. तो एज बस शेड्यूल, अब इसके साथ साथ हम शेड्यूल 3 को रेफर करेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की, जो ये बताता है कि पर्सन हु इज रेजिडेंट बट परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है, तो ये कब होगा हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने ये चीज ऊपर बता रखी है। तो हम ये कंडीशन को कैसे पता चलेंगे, वो रेजिडेंट तो है पर परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ही इज ए सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट, एक्सेप्ट पाकिस्तान स्टेट नहीं होना चाहिए, और ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ऑन डेप्यूटेशन टू द ब्रांच और ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी। सो हमारा जो कंडीशन है गिवन, ये हमारे सेकंड इसमें आता है, क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और वो डेप्यूटेशन ऑन द ऑफिस ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी के उसमें परव्यू में आता है, तो वो रिमिटेंस कर सकता है अप टू हिज नेट सैलरी जो है उसमें कर सकता है। लेकिन आफ्टर नेट सैलरी कब ड्रॉ होती है, जब ग्रॉस सैलरी में से आप डिडक्ट कर देंगे, जो डिडक्शन है वो डिडक्ट करेंगे तो आपका नेट सैलरी आ जाएगा, तो अप टू द नेट सैलरी ही कैन रिमिट हिज सैलरी। और एक्सप्लेनेशन में ये भी बता रखा है साथ में कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, अकाउंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ही हैज बीन डेप्यूटेड ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन और फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और फॉर असाइनमेंट फॉर अ ड्यूरेशन विच डज नॉट एक्सीड 3 years, 3 साल से अगर ज्यादा के लिए नहीं है, तो ऐसे रेजिडेंट, ही इज ए रेजिडेंट बट नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट, हम उसको कह सकते हैं। यानी कि 3 साल से अगर वो ज्यादा के रहेगा तब तो ही कैन बी कंसिडर्ड इनटू दैट डेफिनेशन, हमें देखना पड़ जाएगा, उसके हिसाब से हम उसका वो डिफाइन करेंगे स्टेटस क्या है। लेकिन सिंस इफ ही डज नॉट एक्सीड द 3 years of his stay, of his duration of his stay, because on account of his employment or deputation, तो वहां पे he will be considered resident but not permanently resident. So looking at that, this provision, मिस्टर ए हमने बोला वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो यूएसए में काम करता था एंड हैज बीन डेप्यूटेड इन इंडिया फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 26 months. Of course this is as per requirement, it is not exceeding, यानी कि लेस देन आपका उससे है। तो मिस्टर ए स्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021, भले उसका मोर देन 182 डेज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर गया, बट ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो हर चीज का एक रोल होता है, वेदर इज अ प्रोविजन, वेदर इज एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जो होता है आपको क्लैरिटी देता है कि वॉट एवर इज बिन गिवन इन द मेन सेक्शन। तो मेन सेक्शन में आपको ये सब बताया कि वो कब आपको वो रेजिडेंट है पर परमानेंट नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से आपको और क्लैरिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू इज पीरियड, द लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डेप्यूटेशन। उससे आपको क्लियर हो गया कि अगर वो 3 साल से कम रहा है तब तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। एंड हियर इन दिस केस, सिंस ही हैड स्टेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 26 years and 26 months, that is less than 3 years, so he was being a resident but not permanent resident in India. So accordingly he was allowed to remit an amount up to his net salary. नेट सैलरी उसका कैसे बनेगा, आपका जो सैलरी उसने बताया था ऊपर, अगर आप क्वेश्चन पे देखेंगे, हाँ यस इट इज गिवन ओवर देयर, उसमें से आपने जो डिडक्शंस थे, जो भी उनका पीएफ का अमाउंट था या आपका जो भी टीडीएस जो बन रहा था वो डिडक्ट किया, एंड आफ्टर दैट करने के बाद आपका बनता है 2,70,000। तो उसने क्या किया, उसमें जो उसने रेमिट किया अमाउंट, ही हैज रेमिटेड 280। तब आपको एक्सेस बताना है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो एक्सेस कितना है, $10,000। तो दिस इज द आंसर, क्योंकि देखिए ये कंप्यूटेशन बेस्ड है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है। यू मस्ट बी सीइंग हाउ द लॉ हैज बीन अप्लाइड ओवर हियर इन दिस गिवन सिचुएशन। FEMA में जनरली द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड because this is the something, because you must be seeing that these are the various issues which are commonly taking place, और ये बहुत important issues is generally happens. So FEMA is an important act and you should know it, the intricacies of the act and how the act is being applied in the situations. So this is one of the example for your references that we have taken up. Now moving to the next part is the Arbitration Act. Yes. The Arbitration and Concealment Act 1996 provides a framework for resolve disputes outside the court. It is an alternative method for litigation, an alternative to litigation, and two most common methods of ADR are arbitration and mediation. So when you read this chapter, you will understand the meaning and process of arbitration, different types of arbitration and its difference with litigation. Arbitration agreement with basic characteristics and features and conditions for its enforcement.
what is arbitral tribunal and its constitution is provided into the chapter, and what are the basic requirements for an appointment of arbitrator, arbitral tribunal. Then what is the meaning of constitution, conciliation, basic characteristics, and commencement process of conciliation proceedings. Mainly the KNC direct theoretical question is framed on this, and some differences are there, arbitration, mediation, and some questions are framed on arbitration agreement, whether it is not in writing and it is not in writing, so whether it is an arbitration agreement. So various points are given under arbitration agreement. So just go through this chapter thoroughly, and this is the last chapter, I suppose, of this economic laws portion. So we will take one portion of this act. XYZ Company Limited enter into an agreement with PQR Limited for the supply of Terran tires to PQR Limited for a period of 5 years. The agreement had referred to the terms and conditions contained in the Indian Tire Manufacturing Association for sale and purchase of manufacturing tires. Clause 14 of the terms provided that if any dispute arises between the parties, the same shall be mutually decided by the parties or shall be referred for arbitration if the parties so determine. So what is the requirement of this question? Here the question asks whether the parties under the agreement, that ABC and PQR Limited, will be able to refer the dispute, if any, to the arbitration considering the given scenario and the provisions of the Arbitration and Conciliation Act 1996. The provisions of this act outlines the requirement of a valid arbitration agreement. So it's a very important terminology, arbitration agreement. Its detail is given in the study material. One of such requirement is clarity of consent. That is, the intention to go to arbitration must be clear. In other words, there must be consensus and item. Utilization of vague words cannot be considered as adequate. Further, the this act envisages the possibility of an arbitration agreement coming into being through incorporation, that is arbitration agreement, through reference. In other words, parties to an agreement could agree to arbitrate by referring to another contract containing an arbitration agreement. So if we see this scenario, it was an arbitration agreement through reference, but the terms and conditions of agreement was not clear and it was vague, and therefore the said agreement is not a valid arbitration agreement, as the italics portion in the agreement clearly highlights the need to further agreement between the parties. Accordingly, in the given instance, the parties will not be able to refer the disputes, if any, to the arbitration, since the terms and conditions of that agreement was not clear and it was vague, and thus the arbitration is not valid in law. Yes, students. Yes. Yes, let's take up the queries. The two more queries are that lying in our screen. That is, first is with respect to that Sumit has asked whether 1 lakh limit is as per relative per financial advice under the FCRA. Yes, dear student, if you have read the Rule 6 of SCRR Rules 2011, it clearly says that any person who is receiving foreign contribution in excess of 1 lakh rupees or equivalent thereto in a financial year. So it clearly specified is talking about per financial year wise. The limit of 1 lakh is specified over it. So it is given in the rule itself. So you can make it out in a financial year. It is to be taken into consideration, this specified limit. The next question that is how to remember the penalty, since it is too much cumbersome. Yes, of course, because since company law with every provision is a penalty clause, is actually penalty based legislation somewhat. So in that case, it's a bit difficult to remember the penalty, but somewhere if you will try, then only you will be able to retain some of the important penalties. Means there are some of the important sections. Along with that important sections, you need to retain some of the penalty clause also. So what you can do, you can just make a diagram, or you can make a table, or you can make something, or you can written down wherever you are preparing the notes. In notes, you just include the penalty clause also. So whenever you are reading that particular section, so you will be reading the penalty clause also by that side. So definitely in that case, you'll be able to retain to some extent the penalties also, and that will be helping you in this way. And the rest you can skip up some of the penalties. So that is what emphasizing again. Take the important penalties in your notes, include in your notes, or just mark it that you have to read this penalty clause along with the main sections so that you can retain it. So
I suppose we have taken all the All the queries. queries. Yes. And with this now, we would like to conclude our session. Only the thing is that we really want that you students should be gaining out of this session. And really, whatever the thought process, whatever the suggestions, whatever we have dealt with you Strategies. throughout the session of these 2 days, so we suppose that you must be gaining something out of this session. Only the thing is that the acceptability कि हाँ हमने कुछ सीखा है. जब तक ये acceptability नहीं आएगी तो you will not make it out कि कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला है. दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि कुछ हर चीज में नॉलेज जो होती है हम कहते हैं सब जगह होती है और कहीं से भी हम उसे ले सकते हैं. तो दिस इज व्हाट वी आर इंटेंडिंग एंड वी आर इंटेंडिंग. हमारा भी ये जो मकसद है इस सेशन को शेड्यूल करने में यही है कि आपको इसका भरपूर बेनिफिट मिले. और स्टिल देयर इज अ टाइम कि अभी आप रिवीजन पार्ट पे होंगे. हाउ यू कैन प्रोसीड विद वॉट एवर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स दैट मेक्स अ important stepping step you can say towards the success. और सक्सेस की भी एक कुंजी होता है भैया कि कह सकते हो आपकी इट इज नॉट कहते हैं ना कि इट कम्स विद द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो अब दैट टू विद द लॉजिकल माइंडसेट, अगर आप कोई चीज पढ़ोगे कोई मेहनत करोगे हार्ड वर्किंग कहते हैं ना, हार्ड वर्किंग विद दिस लॉजिकल रीजनिंग, तो डेफिनेटली आपका ये वर्क करेगा. और ये भैया मैं तो कहूँगी टूवर्ड सक्सेस स्टोरी भी यही है कि वर्क वर्क्स. तो आप करिए मेहनत, निरंतर प्रयत्नरत रहिए. अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो वी आर डेफिनेटली देयर फॉर यू. बीइंग एट दिस प्लेटफॉर्म, मतलब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम आपके बच्चों के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं. एंड वी रियली वांटेड यू स्टूडेंट्स कम अप विद योर क्वेरीज, वट एवर द प्रॉब्लम और द इश्यूज दैट यू आर फेसिंग. प्लीज आप हमें अपनी क्वेरी पोस्ट करिएगा और हम यही चाहेंगे कि आप इस सेशन से एब्सोल्युटली गेन करके जाएं और ईश्वर आपको अच्छी सद्बुद्धि दे और आपकी अच्छी सेहत दे और आपको ब्लेस करे. इसी के साथ वी वुड लाइक टू एंड एंड कंक्लूड आवर सेशन. विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. All the very best.